नमस्कार, मैं वापस Suraj Singh again back to you as usual, talking to you regarding Constitution of India, which is very important for us, as we know that to some extent we as a nation failed to this regard. Constitution of this country, Bharat India, means character of everybody linked to Constitution as far as its powers are concerned, preambles are concerned, and constitutional fundamental duties invested on every citizen, expected of every citizen are concerned. Yesterday I was discussing about what we have learned so far, what we have reviewed so far the Constitution, point by point, and we came to some conclusion or some location of these articles that we have certain deficiencies in our approach to our Constitution, which says that it is our Constitution, our document, our power to move our life to an extent preambles are concerned, and regarding fundamental duties which we are supposed to dispose of on each and every citizen's behalf, we have failed to some much extent, and state government, which is called state, has failed to full extent if we consider that. We discussed yesterday about the fundamental duties, which is very important, and we have failed, government has failed, people have failed, we don't even know about duties. How can we dispose of that? Are we bound by Constitution? We have to know that we are bound by Constitution, but if we are bound by Constitution, why don't we know Constitution? That was a point of talk. And that point is very important. It still exists, means we are not doing that one. So I was just talking about that, and we were just going through various contents of this Constitution, and contents were that we had reached up to government level, up to union level, and what union is, how it works. That's the point. Means we have executive, and that is President of India is there, executive power of union, and then election of president and manner of election of president, terms of office of president, eligibility for president, right re-election and qualification etc. and conditions of president office, and oath and affirmation etc. And all these we learned in chapter of president, chapter of union, where president is installed, where you can say president exists in this constitution. Then comes our vice president, then comes election to vice president, the same similar characters in that, similar involvement at level of vice president, and then we go to further down the council of ministers, which is very important point. As we discussed yesterday, council of ministers is government, actual central government is called council of ministers. There's no government of India. In fact, it's the council of ministers. The government of India is executive, and constitutional head of it is the president of this country, not prime minister, because prime minister is functional head who works for president of this country, and council of minister is real government, which is headed by prime minister of this country, and that is definition of prime minister. It's not that prime minister is a separate one. Prime minister is a part of executive, a much lower status than president and vice president, and council of ministers and then prime minister. But prime minister is located number one minister, is that it's top minister, not among equal, but council of minister equal, and head is located by prime minister, and which is an only definition included in constitution of this country, Bharat India, and nothing else. There is no separate institution of prime minister. It is a sub institution under institution of president, or can say an attorney general is there. So question is, the main topic is prime minister. Here we have discussed in our course that prime minister's real duties and detailed duties, just the job description is not defined anywhere. Therefore, every prime minister takes it that way. No job descriptions are defined for any position in this constitution, and that is a deficiency here. We have to make it up ourselves, and whatever happens or whatever minister takes it's their own, just directions, and they just check what happened in past and should happen now. They take it that way, but there is no direct approach to be effective. There is no professionalism, you can say, in this position. No professionalism in position of president of this country, and no professional position of council of ministers and prime minister, which is very deficiency in this council. But the practice of 70 years has brought some data. But we have to understand ourselves. When we are appointing a member of parliaments, we have to define their duties, and when member of parliaments are there, they have to define duties of prime minister. But actually prime minister is head of this state in the functional level, in, you can say, prosecution level. Prime minister has to do what council wants, what council decides, and council has to do what policies have been decided by parliament, what statutes have been decided by parliament, and what policies
are decided by various parts of governance of this country. We have to understand that that is very, very important. Prime Minister has no limitations at all, but he is unlimited as well as he is limited, because Prime Minister is not an independent one. Prime Minister has to report to Lok Sabha and Rajya Sabha, that are council, the legislative bodies, and then Prime Minister has to report to what's happening to President of this country, which is the real head, which is the statutory head of this country, and that's what we have to understood. Definitions of Prime Minister, we know that this is simple definition. He is located at the head of Council of Ministers, and Council of Ministers means government indirectly. Is government of India to say, doesn't mean there's an institution of government of India. There's a Council of Ministers are called Government of India. They report to Lok Sabha and Rajya Sabha and to President of this country and Council of Ministers, and each minister, including Prime Minister, are appointed by President of this country, and ministers are appointed by President of this country based on advice of Prime Minister, which advice is prerogative of Prime Minister, who should go to Ministry, Council of Ministers. And that is what we have here in this constitution, and this actually happens also. Elections to President of India positions are conducted by Election Commissioner of this country. Elections to Vice President of this country is affected by Election Commissioner, and in President of India's elections, all MPs vote and all MLAs vote, wherein election of President, Vice President, different approaches adopted. But in case of Prime Minister, no election is conducted, except that Prime Minister is supposed to win confidence of lower house of this country, Parliament of this country's Parliament, and that is Lok Sabha. If a person who is MP and who wins confidence of House of Lok Sabha is named as Prime Minister, there is no law, there is no mandate in Constitution that he should be having a position of being majority party leader. That is conventional one, but Constitution doesn't say that he should have a majority in his party MPs. That's not the requirement here. There's no requirement. That's functional one, because once you have majority in Lok Sabha, certainly you should have a house of confidence. That is a equal equation, you can say. But Prime Minister is defined, to my understanding, an MP who is elected or who wins confidence of House of Lok Sabha MP. All 545 MP submit their confidence, propose their confidence into a person who is named Prime Minister of this country. That is what we have to understand. Once we understand this, we shall solve half of our problems, but we are not understanding this point, because we say that we elect Prime Minister, while this is entirely fake declaration, fake statement, and fake advice to public. Public has got no right to elect Prime Minister, as well as public has got no right to elect ministers. Public has got only one right, and that is to elect member of Parliament, and that too only for Lok Sabha, not of Rajya Sabha. And public that right is very strong right, very strong power that public cannot realize. That power changes fate of this country. That power changes government of this country. That power changes each and every power of this country, and that is why it is called vote of franchise, right of franchise, or right of suffrage, that we have to understand. It is not very simple to be understood by each and every citizen, because citizens cannot go into that detail. Each citizen is not expected to go into details what we are talking about. They only say, okay, I have to vote, I shall vote. They don't realize the meaning and power of this vote. They don't realize what status this vote has got. This vote can change entire luck of this country, India, Bharat. But we have to teach them, we have to explain to them, and that is the problem, that we have no procedure how to communicate to these people, lowest qualified voter, what vote means. For them, it is just the ballot or button of EVM, and not more than that. And they think once they vote, their duty is over, and that is only a problem appearing here in this country. But we have not to criticize that, we have to educate people, and that is only a purpose that I started this
communication to you people that you understand as far as possible. And I am also not fully aware of each and every item, but whatever I know, I can share with you people, and I have been sharing that, and I feel pleasure in that. But at least something is going to you, and even if nothing is going to, no matter, howsoever it is on video, you can read anytime, you can video watch anytime. Well, you have to understand position of Prime Minister and MP, because Prime Minister is very important element functionally and practically, while in theory President is very important, because without president nothing can move in this country. Each and every commercial, each and every legislative, each and every executive order is expected to be in name of president, because parliament means Lok Sabha plus Rajya Sabha plus president. You cannot simply say parliament equal Lok Sabha plus Rajya Sabha. That is called incomplete definition, incomplete analysis. So parliament equal to Lok Sabha plus Rajya Sabha plus president of this country, which equal to parliament, and which means the president is involved everywhere in legislature. This is legislative function of president. If you see executive function of president, each and every order, each and every tender, each and every, even for single rupee, it is understood that it is on behalf of president of this country and not behalf of prime minister. Budget or something or whatever, statutes or bills and acts, all are required to be signed by president. It may be a legislative function, it may be executive function. Of course, there are delegated procedures, delegatory powers given to Council of Ministers and to ministries in form of delegated legislatures, bylaws, regulations, which continue once orders shall continue like that. And if you see then about judiciary, in judiciary also the complete independence in this country, but some power is also given to president to just to pardon some criminals like that, or he is called, president is called supreme commander of armed forces, all armed forces. So statutory or constitutional, according to the UN Charter, our head of state is President of India. I am saying head of the state because India, Bharat, and every other nation in terms of UN Charter is regulated as state also. So let's go further down to Attorney General of India, which is just another one. We have talked about that. Then conduct of government business, that details we have discussed with. Parliament is very important from legislative point of view. We discussed there in constitutional parliament. Parliament is that we just explained to you, Lok Sabha and Rajya Sabha and president of this country. Virtually it is Lok Sabha and Rajya Sabha only, because president is not involved in each and every sitting. He is involved indirectly and also just for address first session after budget. And then composition of Council of States. Composition of Council of States, and we know what is Council of States, the Rajya Sabha, and Rajya Sabha means higher house. And then composition of House of People. This 81 article is very important article. You must refer this article yourself if you can, because this article is guiding factor of our electioning system. If we don't understand Article 81, we cannot understand our system, our nation, because this is the root of everything. Article 81 is very significant out of 395 articles, because it impacts on each and every affair of this nation, because this is Constitution of Lok Sabha or House of People, and Constitution of Lok Sabha and House of People means yourself. You are there as voter, as citizen, but physically you are not there. You are there through some person and through some member of parliament of Lok Sabha, and that person represents you there in House of People, which you are not aware of. When your MP is sitting there in House, this means you are sitting there. You all are voters sitting there in the House and talking and questioning and taking part in debates, but this is not happening. Your representative in form of MP sitting there. This does not apply to Article 80, which is composition of Council of State, there where your authority is not at all available. On 81 is an article in Constitution that is exclusively for you, because it permits you, it authorizes you, it empowers you to constitute this body yourself by direct voting, and election commissioner administers this power on your behalf to support you. So you are a person as a voter of this country that constitutes House of People, and you have to understand that your vote is going to MP and not to PM according to Article 81 of Constitution of India, which is
to constitute Lok Sabha and House of People. Once you understand it clearly, all problems of your future will be over, because you will be inclined to elect only a good MP and not a feasible Prime Minister or imaginary Prime Minister, which you actually cannot elect yourself, but just you are misled by various political parties and misled by television channels and misled by all those who interview you that you are going to elect Prime Minister, which is a fake understanding, which is a fake consideration, which is just a fake thought imposed upon you, inculcated into your minds, which is not a fact of life. Fact of life is this, that you are going to elect your representative who sits on your collective behalf of voters in Lok Sabha and decide your fate for this nation. And that is Article 81. Remember it, it's very important. Or don't waste your vote if you cannot understand this. Then you go to Article 82, readjustment after each census. There's something else, and that duration of Houses of Parliament, you know it very well. What duration is out of Parliament means Lok Sabha and Rajya Sabha, different durations are there, we all know that. And then we go to qualifications for membership of Parliament. There's, of course, there's an article of qualifications, but these qualifications are by for something else, not for educational qualification or academic qualification. They're just for age, just for status of your mind and eligibility, something else like that. And then you go to 85, it says sessions of Parliament, prolong them, etc. It's about procedure, the right of both President and address Parliament, and then again there is a specific address of President and right of Ministers and Attorney General as respect Houses. So then we go to Article 89, which is Chairman and Deputy Chairman of Control of Council of States, and then vacation and resignation of and removal of from office of Deputy Chairman. So this all we have discussed in that position previously, just reminding and refreshing where we discussed about, thought of, learned. The power of Deputy Chairman or other persons to perform duties of office of or as Chairman, and 92 Chairman of Deputy Chairman is all related to Rajya Sabha, which is very little impact upon you, which you know, maybe you don't want to know about this, but better it is to understand Speaker and Deputy Speaker in the House of People, then at vacation, and remember there is Speaker and Deputy Speaker in Lok Sabha and not in Rajya Sabha. In Rajya Sabha there are Chairman and Vice Chairman like that. It is difference only in vacation, resignation or removal from office of Speaker, etc. And then these are all procedures, don't affect your values and power of Deputy Speaker, and further down is the Speaker or Deputy Speaker, and then you go down to salaries and allowances, and then Secretary of Parliament, and that's it. After the conduct of business, oath or affirmation of members by members and votes, voting in House, power of House, etc. And then go to disqualification of members, which is vacation of seats and disqualification of membership, decisions, questions as to disqualification of membership, and penalty, etc., and power privileges and immunities of Parliament and members of general and legislative procedures, which are fixed procedures, and this is difficult to be known by everybody. And procedures in financial matters, which is annual financial statement, which is enacted for 1 year, then procedure of Parliament with respect to 20,000. Annual financial statement, don't be confused about that. There is nothing on annual budget, which comes in March or the end of March, and that's called financial year starts from 1st of April to 31st of March next year, and that is called financial year. And this budget applies onto that, and it's called fine budget, or we can annual financial statement AFS, and that is equivalent to budget. We generally call it budget because we cannot understand annual financial statement term. So procedure in Parliament with respect to estimates and then appropriation bills. And supplement appropriation bills is understand what is appropriation. Appropriation is suppose there is a fund allotted to some item and you don't use that fund for that item, used for someone else. That's called appropriation and misappropriation. If you are using fund to write one, that's called appropriation. If you misusing that fund to some other task, and it's called misappropriation. Supplementary, additional, exceed grants, and votes on accounts, etc., etc. And these are the procedure generally. What are general procedures, rules of procedures are there, regulation by law, procedure in Parliament in relation to financial business, and there is language to be used in Parliament, and restriction on discussion of Parliament, and courts not to inquire into proceedings of Parliament. That's very important point here. You may say that court is highest in general consideration, but fact remains that legislature itself is isolated from court to an extent. Proceedings system working in Lok Sabha and Rajya Sabha are concerned. Authority of court is not accepted by these houses. There is no authority of courts to interfere or raise questions about what proceedings transpired among both houses, and that's what it is. Not only houses in here in Parliament, but also in assemblies.
Let's move then legislative powers of presidents. Power of president to promulgate ordinances during recent recess of parliament. When there is no parliament, president has no right to issue ordinances which are equivalent to acts, and these are acts until act doesn't take place of ordinances. Then you go to under judiciary, union judiciary, which we discussed last or judiciary, but established judiciary is an independent institution to be not interfered by parliament as well as not to be interfered by executive itself. So this is independent one, but funded by government. The establishment and constitution of Supreme Court and salaries of judges and appointment of acting Chief Justice, appointment of ad hoc judges. Ad hoc means temporary, then attendance of retired judges at sittings in Supreme Court and Supreme Court to be court of record, and seat of Supreme Court is original jurisdiction of Supreme Court, and after that is appellant jurisdiction of Supreme Court to appeal from high courts and certain cases, appellate jurisdiction of Supreme Court and appeals from high courts in regard to civil matters, and appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters, and certificate for appeal to Supreme Court. And all these points are given in this judiciary, which I think you can read yourself in your time if you wish, or just partly I have spoken to you because it's no use to waste time on speaking. That is available in index of the in Constitution of India. Then you guys go to Comptroller of the General of India. It's a very famous institution, and we all are concerned about this. Comptroller and of the General, short is called CAG. CAG head office, which is located at ITO near in Delhi, at costing of income tax office. One side institution of engineers, and one side is police headquarters, and on one side is one school, and one side is in Comptroller at the General of India, adjacent to Bureau of Indian Standard. That's a head office of Auditor General CAG, and this has been very effective in our life because we come to know about news from CAG that stirred the whole Congress government in 2014 and dropped this government to slump with zero. And this is very important part manipulated one these days. This is a constitutional body because it's a part of constitution of this country. In chapter 5, this is a constitution. It should not be swayed by government of India. It should not be swayed by legislature. But virtually it happened, and people had to suffer because of this institution. Comptroller and the General of India, and duties and powers of Comptroller and the General, and form of accounts of Union and of State auditing post. This is the functions of the defined in Article 148, 149, 150, and 151, and you can read that as well. And then the other states are concerned. The chapter this is Article 152, States Part 6 chapter, and this is executive, and executive is governor of a state, executive power of the state, appointment of governor, terms of office of governor, qualifications for appointment of governor, conditions of governor's office, oath or affirmation of the governor, discharge of functions of governor and certain contingencies, power of governor to grant pardons, etc., extent of executive power of the state. And similarly, as based in Lok Sabha, this council of ministers here in the states as well, council of ministers to aid, advise governor, other provisions and to ministers. Same thing applies in similar pattern at the state level. Advocate General is there, then conduct of government business, then state legislature, assembly you call it, and then if you go further down, office of state legislature as usual, no need to repeat each and every article. If you go to conduct of business, there same thing, disqualification of members, same type of chapters, but at a state level. The power and place of women to the state legislature, and then it was all are immune from actions. And then procedure of financial matters and procedure generally goes down. High courts in states, high courts we just were talking yesterday, and we talked this, there was the titles and just telling you what were high courts is Article 214, Chapter 5. High courts in states, and 249 says high courts for states, then high courts to be courts of regard, constitution of high courts, appointment and conditions of office of judge of high court, application of certain provisions relating to Supreme Court and High Court, oath or affirmation by judges of High Court, restriction on practice after being permanent judge, salaries of judges, transfer of judge from one High Court to another, appointments of acting Chief Justice, appointment of additional and acting judges, appointment of retired judges at sittings of High Court, jurisdictions of existing High Courts, power of High Courts to issue certain rates
and then power of superintendence over all courts by a high court, and transfer of certain cases to high courts, officers and servants and expenses of high courts, extension of jurisdiction of high courts to union territories, establishment of a common high court for two or more states. This was up to Article 231, and then it was started from Article, you can say article started from 214 and it carried down to 231, which is explaining about legal status, constitutional status of high courts. And then chapter 6 starts subordinate courts, which I have not discussed with titles, I'm just telling you about that. 233 article says appointment of district judges. Then 233 is validation of appointment of and judgments, etc., delivered by certain district judges. Then 234 says recruitment of persons other than district judges to judicial service. Then 235 speaks control over subordinate courts, and then after 236 interpretation, and 237 appointment of provisions of this chapter to certain classes of magistrates. Then next part is state part. First schedule states and union territories is there, and then another part is panchayats, which we have discussed already, and we have discussed already about municipalities. This is part 9A, and we have discussed about schedule and criminal area. Just the titles of just a reminder what these are. For example, if you are saying about union territories, or we say about states part, we have first schedule, we will say subordinate courts I just told you, and then it's about union territories. It's the administration of union territories, Article 239, and 239A is creation of local legislatures or council of ministers, or both for certain union territories, and special provisions with respect to Delhi. And a 239A is provisions in case of failure of constitutional machinery and power of administrator to promulgate ordinances during recesses or legislature, and power of president to make regulations for certain union territories, and high courts for union territories. And Panchayat says that Article 243 definition, then Gram Sabha, then Constitution of Panchayat Article 232B, for 243B, then 243C says composition of Panchayat. So both are composition of Panchayats, 243B and 243C. Then 243 is reservation of seats. Then 243E says duration of Panchayats, etc. And 243F says disqualification from membership. And 243G says powers, authority, and responsibilities of Panchayat. And then 243S says powers to impose taxes by and funds of Panchayats. Constitution of Finance Commission to review financial position, and audit of accounts of panchayats, election to panchayats, application to union territories, then part not to apply to certain areas, continuance of existing law and panchayats, bar to interference by courts and delay matter, and point the source communication, continuance of existing laws and panchayats. This is a very important point of existing law in panchayat, because there were laws which were previously approved, previously available before 14.7, and those were at the time were called existing laws. So I'm just not going to details of that. We go to part 9, which is municipalities, which mandate, which tell us what provisions are available in the Constitution, and that is definitions of Article 243P and 243Q, Constitution of Municipalities and Constitution of Municipalities, and Constitution and composition of wards, committees, etc., reservation of seats and duration of municipalities, then disqualification for members, and powers, authority, and responsibility of municipalities, and then power to improve tax by and funds of municipalities, finance commission, then audit of accounts of municipalities, then elections to municipalities, and application to union territories, part not to apply to certain areas, committees for district planning, committee for metropolitan planning, continuance of existing laws in municipalities, bar to interference by court in electoral matters. So we had talked of schedule and travel areas as well, and then we had talked relations between the union and the state. This we have not talked, but further I'll talk it now. And before that, we'll just see what else we have studied in this.
This will later on now. Then it is administrative relations we have to discuss with. We are not discussed yet. Then dispute relating to waters and coordination between states. Then finance, property, contracts and suits we are not discussed yet. And then we say that miscellaneous financial process also we have to discuss there. Then borrowing what should be and property, contracts, rights, liabilities and objectives and suits. All that is there. Then right to property is there. Then trade, commerce and intercourse within territory of India, Bharat, and is a service under union and states is there. And then it is regarding public service commission, and it is regarding tribunals and elections, and then then special provision in relation to certain classes. And then it is official language, and after that is uh, emergency provisions. So miscellaneous, miscellaneous also important. We'll see what it includes in. Miscellaneous includes like the protection of president and government and as promotes. Protection of president and governors and reasonable approach. Protection of publication of proceedings of parliament and state legislature, disqualification for appointment on remunerative political posts, and then bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, and recognition granted to rulers of United States to seize and pursue be abolished. Then special provisions as to major ports and aerodromes and effect of failure to comply with or to give effect to directions given by Union. And then chapters amendment of the Constitution and then temporary transition provisions. We have read this. So we have just gone through next part is short title, commencement, then authority, text, Indian appeals, and then the excusals. So this is what we have discussed mostly so far, and we will now. Most important thing is that we will go to 245. I think the article 245. That's a very important one. Though it's boring, but it's very important. One should know about this. Boring maybe, but it's a question of life. You cannot simply say, I don't know. It's part of human knowledge. So it is 245 is relations between union territories and states. And before that, we have to confirm or deliberate what we have discussed so far. It's very important as well. We cannot take things so easily taken up, as I discussed before. Constitution in itself is an imagination. Everybody doesn't understand and doesn't even know about Constitution, though it's not good. It's not good practice, but it is practice actually. You ask someone, qualified one, ill-qualified one, you will not get good response except in few cases where people have certain knowledge about this, but that is very, very negligible. My impetus is on every citizen of this country, irrespective of qualification or no qualification, that get some knowledge about in society, in country where you are living in. You may face losses sometimes because of being ignorant what provisions are there, because you are dealing at state level or you are dealing at municipal level. Even if you are dealing at state level, you should know about this. It doesn't matter you are MP or MLA, it doesn't matter. Matters is that you are a part of this country, you are citizen of this country. That is important rather than being MP or MLA, because MPs and MLA come out of us. They don't come out from USA or USA or England. They come out of us, and we send them by ourselves, and we are responsible for them. They are not responsible to us, because we appointed them. We have to take work from them.
We have to extract powers of their physical and mental strength, that we have to extract them, use them on our constitutional framework. But it's not happening, it never happened, and I don't expect it happens soon. There is no way we can raise questions. There is no way we don't raise any questions. We say, we treat them as they are our semi-god. We don't have any right to ask them. But this is not true. Truth is that you open your eyes, open your minds, open your talks, open your tongue, open your heart and everything, and consider them as they are. They have to respond to you because they are your people. You appointed them indirectly by virtue of your vote. They have not been directly elected by you, but they have elected, nation has elected them for us. That is most important, and we have to respect that. But we are not doing that. I don't know what reason is. Reason is that why should I know constitution? Everybody thinks. Why should I know? What shall I do with that? Everybody thinks that way. But that is not correct approach. You have to know, at least if not thorough, some knowledge of constitution which can directly affect your life. For example, you are blaming sometimes someone who is not blamable, who is not worth blaming, but the person who is to be blamed is not being blamed. That's the impact of this, because we don't even know what is constitution, and it applies same to the state. We don't know what laws, how laws are, you can say legislation, how people work, how government work, and how non-government NGOs or non-government organizations. And I can say all are government organizations. If you are even thinking of nation, you are working for nation, but you are just private person. Well, जब तक आप संविधान को नहीं जानेंगे, आप नुकसान ही उठाएंगे, फायदा नहीं उठाएंगे. आई एम जस्ट स्पीकिंग लिटिल ऑन to those people who have not gone through all this stuff, who are not able to understand English. English is of course very important, but our own language is also more and more important, and that is the reason we try to get something out of that into your mind. Not exactly translation of what I talked about, just the interpretation and impression of that is on your life. भारत माता कहती है, संविधान मैंने बनाया आपके लिए, और भारत माता कोई नहीं, आप स्वयं भारत माता हैं. भारत माता किसी पक्षी का नाम नहीं है, भारत माता कोई जमीन का नाम नहीं है. भारत माता का मतलब भारत की जनता, भारत की 135 से 140 है, जितनी भी जनता होगी या रही है, वो जनता भारत माता है. वो जनता ही इस देश को चलाती है, वो जनता इस देश में रहती है, इस देश को बनाती है, खाती है, पीती है, सोती है, रहती है, इस देश की शक्तियों का इस्तेमाल करती है. उसे कहते हैं भारत माता. प्रियम्बल्स भी भारत माता है, संविधान का पूरा स्ट्रक्चर भी भारत माता है. मैं भी भारत माता का हिस्सा हूँ, आप भी भारत माता का हिस्से हैं. भारत माता को समझने के पहले आपको अपने आप को ऊंचा रखना होगा, अपने मस्तिष्क को उठाना होगा, भी आत्मा को मजबूत बनाना होगा. नहीं तो ये नेता जो स्वयं चोर डकैत बैठे हुए आप ही के द्वारा भेजे गए हैं, ये आपका चखना चूर कर देंगे, आपका सब अधिकार छीन लेंगे, आपको एक कोने में फेंक देंगे, किसी ड्रेन के अंदर डाल देंगे. ऐसे लोग हमारे नेता, जिनको हमने बनाया है और हम इन पर घूरते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि इनको अपने बहुत सारे दोस्त मिले हुए हैं. अगर ये भी हमारी तरह एक जगह लोकेटेड होते, अरेस्टेड होते, अपने आइडियाज में अरेस्टेड होते, अपने जॉब में, शायद इनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती. ये तो अपने आप को मालिक समझते हैं, और याद रख लेना, मालिक कोई नहीं है. मालिक यहाँ का संविधान है, मालिक यहाँ के लोग हैं, इसके अलावा कोई मालिक नहीं है. हम जब संविधान के इन आर्टिकल्स को समझेंगे नहीं, इनके मतलब नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं कहाँ पर क्या है, कभी जरूरत पड़ेगी तो खोल नहीं पाएंगे. हर बात के लिए हम वकील की तरफ नहीं जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट की तरफ पूछने नहीं जा सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमें कौन बताएगा. लेकिन बात को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारे देश का हिस्सा है, ये हमारे समाज का हिस्सा है, ये सामाजिक ज्ञान है, सामाजिक शास्त्र है. आप कह सकते हैं सामाजिक ज्ञान है, ये सामाजिक शास्त्र है. ये इसके अंदर इतने ऑर्डर्स डले हुए हैं, इतने ध्वनियाँ डली हुई हैं कि कभी भूलते नहीं कि कहाँ बैठे. ये जरूरी होता है. इसलिए मैंने सब बताया आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा. खास तौर से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं. वो पहला है प्रिएम्बल्स, हमारे संविधान का, और दूसरा है हमारा ड्यूटीज, फंडामेंटल, मूल कर्तव्य इस देश के लिए. अगर ये बात दोनों आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आप संविधान को समझ पाएंगे. बहुत से लोग हैं जो पढ़ गए हैं, समझ गए हैं, लेकिन वो बहुत कम है. अभी भी सब नहीं जानते हैं कि संविधान, पहले तो संविधान का मतलब नहीं जानते हैं कि संविधान क्या होता है, और जान भी जाते हैं तो ऐसा बताते हैं कि वो नहीं जानते. सारे बैग लेके जाते हैं आजकल, सारे कागज होते हैं. इन चीज़ों को लिखा भी जा सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो आपको समझा भी जा सकता है कि संविधान क्या कहता है. किसी बात भी की और कई लेक्चर भी आपने लिया कि क्या बताया आपने, तो आपको यही पता लग सकता है कि आपको बताना होता है तो उसका रिजल्ट भी आता है. कई बात समझने की, आप समझ जाएंगे कि आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आप एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे.
आप इन नेताओं से पूछने का हक रखते हैं। वो हक जो आप यूज नहीं करते हैं, आप डरते हैं उस हक को यूज करते हुए, वो हक आप खुल्ला यूज करेंगे और तभी समझा जाएगा कि आपके वो नेता हैं, वो आपने उनको नेता बनाया है, तो उसमें पूछने का हक भी आपका है। और नवोदय भी सोच जाएंगे नेता भी कि आप अब समझ गए हैं बात से, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे आप समझ गए हैं, आप अपने पूरे गृह मंच के बारे में समझ गए हैं, आप अपनी ड्यूटीज को समझ गए हैं, तो ये राजनीति क्यों नहीं समझते। इसका मतलब ये हो गया तो वो अपने आप को सुधार लेंगे या अपनी दीवार गिरा के यहाँ से हट जाएंगे, बैठ जाएंगे। ये उनको देखना है और आपको देखना है। हमारा संविधान बना है, हम लोगों ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। हम ही लोगों ने अपने आप को दिया है, उस कानून नियमित किया है और हम अपने आप पर लगाते हैं। उसमें 3 बातें प्रमुख हैं। पैरामीटर्स देश के हैं और 3 बातें हैं देश के। जो पैरामीटर्स हैं वो कहते हैं कि हम प्रभुसत्ता संपन्न देश है, हम सामाजिक ज्ञान, सामाजिक सृजन को मानने वाले लोग हैं, हम सेक्युलर को मानने वाले लोग हैं, मतलब हम पंथनिरपेक्ष लोग हैं, हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन स्टेट किसी धर्म से बंधी हुई नहीं है। इसी प्रकार से हम जनता भारत के भी किसी धर्म से बंधी हुई नहीं है। और हम डेमोक्रेटिक हैं, हम लोकतांत्रिक हैं, हम वोट में विश्वास रखते हैं, हम सारी जनता का एक साथ काम करने में विश्वास रखती है। और जो भी सब लोग चाहेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे, उसी को माना जाएगा। और उसके बाद रिपब्लिक आता है। रिपब्लिक का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। पहले राजा का रास्ता, उससे पहले मुल्कों का रास्ता, उससे पहले भी कई रास्ते, लेकिन राजाओं के राज को हटाने के बाद यहाँ पब्लिक का राज दे दिया गया। आज अधिकार पब्लिक का है, तो पब्लिक वोट देती है। पब्लिक हर व्यक्ति को सुनती है, प्रधानमंत्री से लेकर डाउन तक, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तरह से या परोक्ष रूप से। यही है भारत का संविधान। और ये हमें क्या देता है, हमें जस्टिस देता है, न्याय देता है, ये हमको लिबर्टी, हमको स्वतंत्रता देता है, ये हमको और क्या क्या देता है, देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वालिटी देता है, ये सब देता है हमको। किस तरह से देता है, वही होता है कि आप किस तरह, जिस तरह भी काम पे जाते हैं तो वहाँ आपको एक चीज़ दूसरी मिलती है। आपको आदेश दिया था कि आप ये काम कीजिए, आपको करना पड़ता है, तो उसे पता है ये नहीं करूँगा तो एक खाली पे चला जाएगा। ये बात जरूरी है, समय नहीं। अगर आप प्रेम को समझ लीजिए कि आपको अधिकार मिले हैं, सामाजिक अधिकार मिले हैं, आपको इकोनॉमी मिली है, आपको जस्टिस का अधिकार मिला है, न्याय का अधिकार मिला है, आपको विद्या का अधिकार मिला है। ये अधिकार आपको छोड़ नहीं सकेगा कोई भी। लेकिन सब छोड़ देते हैं, चल देते हैं, बैठे रहते हैं, कई साल वेट करते हैं, फिर पब्लिक के पास आते हैं, पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। और शायद वो भूल भी जाते होंगे कि उन्होंने चुनाव में क्या वायदे किए थे, क्या नहीं। इसलिए जरूरी है सब समझना कि हम क्या समझते हैं। जब तक हम ये समझेंगे नहीं, हम चाहे गरीब हो या पैसे वाले हो या मिडिल क्लास हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से लगता है कि हमने समझा क्या है, हम जानते क्या है। अगर हम इतना नहीं जानते हैं तो हम बेवकूफ़ समझे अपने आप को। हम समझ लें कि हम अन पर गवार हैं, हम संविधान को नहीं जानते, हम देश को नहीं जानते, हम अपनी पावर को नहीं जानते, हम नहीं जानते कि हमारा काम कौन करेगा। हम सोचते हैं कि हमने बोल दिया, काम हो गया। आपकी आवाज़ कहाँ तक जाती है आपको पता भी नहीं लगता। हवा में कहाँ डिजॉल्व हो जाती है पता भी नहीं लगता। आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचती नहीं है। आने दो उनको, गुस्सा आने दो राष्ट्रपति को। हमें गुस्से से नहीं डर लगता है, हमें उनके कर्मों से डर लगता है। उनके कर्मों में ही देश तोड़ा है, चाहे सभी हों, उनके कर्मों नहीं गाया खाई है। ऐसे लोग कितने होते हैं आप समझ लीजिए, बहुत कम होते हैं। क्यों नहीं होते, उसके कारण है, उससे नहीं होते। आप जब समझ लेंगे ये बात है कि आपको जस्टिस चाहिए, सामाजिक जस्टिस चाहिए, पॉलिटिकल राजनीतिक जस्टिस चाहिए, आपको सब चीज़ों की जस्टिस चाहिए। वो जस्टिस कहाँ से आएगी आप सोच लीजिए। वो जस्टिस आपको आएगी इसी संविधान से आएगी। जस्टिस कोई बाजार में खड़ी नहीं है कि आप जाएंगे लाएंगे मुझे ये दे दीजिए, या किसी माल में मिलती है कि आप जाइए वहाँ से दे दीजिए, या प्रधानमंत्री आपको देगा या कोई मिनिस्टर आपको देगा। कोई आपको नहीं देगा, जस्टिस आपको खुद देनी पड़ेगी। आपके मूल अधिकार डिफाइन हैं, आपके राइट्स डिफाइन हैं, आपकी ड्यूटीज परिभाषित है। तो आप किस बात का डर है कि आप दूर भागते हैं उन चीज़ों से। समझते हैं क्या हुआ है संविधान। संविधान कोई हुआ नहीं, हमारे सोचने का ढंग हुआ है। हम सोचना नहीं चाहते देश के लिए, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। जब आप देश के लिए सोचेंगे तो आप प्रधानमंत्री कौन होगा इस बात के लिए नहीं सोचेंगे। जब आप देश के लिए सोचेंगे तो ये नहीं सोचेंगे मेरा फर्ज क्या है क्या नहीं है, आप टैक्स बराबर देंगे। जब आप देश के लिए सोचेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अपोजिशन लीडर कौन होगा। देश के लिए आप सोचेंगे तो ये नहीं सोचेंगे किसने क्या, आप अपना एक्शन खुद लेंगे। जितनी आपकी शक्ति आप लेंगे और कहेंगे दिखाइए हमें डॉक्यूमेंट कहाँ है, आपने वैसा खर्चा कहाँ किया है। आज वो हालत आ गई कि इन सब चीज़ों की वैल्यू खत्म कर दी गई है। आज हम पूछ नहीं सकते किसी से, कोई पब्लिक पूछ नहीं सकती है, प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकती है, मिनिस्टर से नहीं पूछ सकती है, रिपोर्टर्स को पूछने नहीं दिया जाता है कि बताइए इसका उत्तर क्या है। कोई उत्तर ना आ सकता है। वो सोचते हैं कि हमने जो कर दिया बस ठीक कर दिया, हमसे पूछ के नहीं। हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, हम इस देश के अपने मान को मानते हैं कि हम हैं बस। जब हम हैं बस का सवाल आ जाता है तो सब में सत्यानाश शुरू हो चुका है। ओरिजिन जो होता है एक्स एक्स वाई एक्सिस पे, वो जीरो का जो पॉइंट बीच का होता है जो ओरिजिन कहते हैं, जीरो होता है। उस पॉइंट से हम आगे चल दिए हैं देश को तोड़ने की तरफ, देश को बनाने की तरफ, देश को बर्बाद करने की तरफ। ये संविधान जो भारत का बनता है जो कहता है नहीं हम सब एक साथ रहेंगे, हम सब धर्मों के लोग, हम सब जातियों के लोग, बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, वो सब बातें समाप्त हो जाती हैं।
जब ये बातें मन में आती हैं कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, आप ये हैं वो हैं, वैसे क्यों हैं, आप इस धर्म में आ जाइए, आप उस धर्म में आ जाइए। जब ये बात देश में हो जाती है तो देश में विज्ञान नाम की चीज़ नहीं होती, देश समाज नाम की चीज़ नहीं होती, देश में कुछ ऐसा नहीं होता कि इसको कहा जाए कि देश को लेकर आगे बढ़ाने वाला है। वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमें देश को बना के रखना है, क्योंकि संविधान हमारा कहता है आप शक्तिशाली हैं। एक वोटर जब तक ये नहीं सोचेगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरी शक्ति क्या है, तब तक प्रधानमंत्री अपने आप को लाट साफ समझेगा, मैं इस देश का राजा हूँ। और राष्ट्रपति तो साइन करने वाली मशीन है ही, वो भी अपने को समझेगा। और कोर्ट्स भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि कोर्ट्स भी एक तरफ से राजनीति में नहीं है या है। सवाल ये नहीं है तो वो भी भारत के नागरिक हैं, तो वो भी हमारी तरह फैमिली वाले, उनके भी खर्चे हैं, वो भी कोई रिश्ते लेना नहीं चाहेगा। नहीं तो कोर्ट तो फुल पावर होती है, सरकार को गिरा दे, चढ़ा दे, क्योंकि आपके डिसीजन को खत्म कर सकता है कोर्ट, और खत्ता भी रहा है। लेकिन आज कोर्ट ऐसा नहीं है। आज का कोर्ट ज़्यादा है और काम कम है। कोर्ट के नाम ज़्यादा हैं, कोर्ट की पावर ज़्यादा है, लेकिन जजमेंट डिसीजंस कम है, डिफेक्टिव हैं। हम अब बात ये नहीं है कि हम आलोचना कर रहे हैं, किसी की आलोचना करने की जरूरत है, आलोचना भी करनी चाहिए। जब तक आलोचना नहीं करेंगे तो साफ नहीं समझ आएगा, हम जान नहीं सकेंगे सच क्या है, गलत क्या है। आलोचना का मतलब, क्रिटिसिज्म का मतलब यही होता है, हम एनालिसिस कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के देख रहे हैं कहाँ सच है, कहाँ गलत है, क्या होना चाहिए था, कहाँ क्या हुआ। यही होती है आलोचना। आलोचना कोई पीछे आके गाली देने से किसी को नहीं होती है, किसी को छेड़ने से नहीं होती है, कोई इज्जतदार काम होता है, उससे हम नहीं है। ये बात जब आप वोटर समझ जाएंगे तो संविधान की इज्जत करेंगे, संविधान के सामने झुकेंगे। लेकिन आज हालात ऐसे नहीं है, अभी कुछ और साल लगेंगे आपको रीइंस्टेट करने में। ये बात मेरी कहने की है। संविधान को समझिए, आर्टिकल से हम पति उठा ही रहे हैं, पढ़े रहे हैं, तो आप समझ ही जाएंगे कि आपको मिल ही जाएंगे। और मेरी बात से भी नहीं मिलते हैं तो आप इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि मेरी बात को मानिए। मैं कह सकता हूँ, मैं सालों से कभी नहीं कहता कि आप मेरी बात मानिए, लेकिन जब मैं कोई काम नहीं करता है तो उसको ठीक भी कर देता हूँ। है ज़्यादा लंबा बोलना आप लोगों को समझ आए ना आए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भारत के उन लोगों से, भारत के उन युवाओं से और युवतियों से कहना चाहूँगा कि आपका फर्ज बनता है इसको पढ़े, क्योंकि भारत के भविष्य को आपको संभालना है। भारत के भविष्य को आज के बुजुर्ग के मेरे जैसे लोगों को, वेटरन्स को, सीनियर्स को नहीं संभालना है। वो तो जाने की तैयारी में है, कौन कब जाता है कौन नहीं जानता, मैं कब छोड़ के चला जाऊँ, मेरा वीज़ा कब आ जाए मैं नहीं जानता। ये सब जानते हैं, सच्चाई, इससे भाग नहीं सकते। एक समय होता है 60 साल के 65 साल के बाद आदमी ज़्यादा स्टेप नहीं कर सकता कि मैं ये करूँगा मैं करूँगा। जो करता है तो गलत फहमी का शिकार है, उस समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिंदगी से लगाओ, जिंदगी से लालच, फैमिली से लालच जितना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ जितना कर सकते हैं आप कीजिए, समझा सकते हैं समझाइए। आप एक्सपीरियंस वाले आदमी होते हैं, वेटरन है, आप 70 साल के, 60 साल के, 80 साल के आप हैं, तो आपने ज़िंदगी में जो भी सीखा है उसको शेयर कीजिए लोगों से। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो आपके साथ जाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका शरीर तो यहाँ रह जाएगा, आत्मा आपको लेके जाएगी, लेकिन वहाँ किसी काम का नहीं आना, क्योंकि वहाँ यहाँ की तरह बूचड़ खाना नहीं है। वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, भगवान का घर है वो। ये तो हमने ख़राब कर दिया है। जहाँ हम रहते थे 60-70 साल में बर्बाद कर देते हैं इसको, हम चल देते हैं। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अरे क्यों तोड़ने आते हैं हम, किस चीज़ को बनाने क्यों नहीं आते हैं, क्यों इज्जत नहीं करने आते। जब हम आए थे, क्या हम धर्म लेके आए थे, हमको सोचना चाहिए। भगवान ने क्या हमें कोई सर्टिफिकेट दिया था, सोचना चाहिए। कौन सा प्रमाण पत्र दिया था कि आप हिंदू बन के जा रहे हैं, मुसलमान बन के जा रहे हैं, सिख बन के जा रहे हैं। ऐसा हम कुछ नहीं लाए थे, लेकिन हाँ हम आगे बन गए। हमारे माइंड इतने तेज हो गए कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमको सोचना चाहिए। हमें बहुत गलत होता है। मेरा प्रश्न एक ही उठता है, जो धर्म की बात करते हैं, धर्म के ठेकेदार चाहे भी किसी धर्म के हो, हमें ये धर्म की बात नहीं करता। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भगवान का धर्म कौन सा है? किसी के पास क्वेश्चन का उत्तर है तो मुझे बता दे। कोई भी भगवान, जिसको आप लोग भगवान मानते हैं, किसी भी धर्म के होकर मानते हैं, उसका अपना धर्म कौन सा है? कोई बताएगा? कोई नहीं बता सकता है। आपका धर्म कहते हैं हिंदू है, आपके भगवान का धर्म कौन सा है? आप कहेंगे हिंदू है। कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, कब कहा है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान या सिख है ईसाई है? कौन से भगवान ने कब कहा है? या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी कल्पना है, आपकी सोच है, उस सोच में आप जिंदगी निकालना चाहते हैं, उस कल्पना में जिंदगी निकालना चाहते हैं जो गलत है, जो सही नहीं, इसका सत्य भी नहीं है। आप हिंदू बन के नहीं आए थे, आप मुसलमान भी बन के नहीं आए थे, आप सिख भी बन के नहीं आए थे, ईसाई बन के नहीं आए थे। आप आए थे तो भगवान का एक यूनिट प्रोडक्शन प्रोसीड मेटेरियल बन के आए थे। उस मेटल का नाम है मानव शक्ति, मानव, जो आग भी हो सकता है और भी हो सकती है, जो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। उसको मातम शक्ति मानते हैं, भगवान का कार्यक्रम क्रियाक्रम मानते हैं कि भगवान ने ये हमारा कार्यक्रम बना के भेजा है, हमारे साथ भेजा है, हमको बनाए कि जाइए आप इस काम को करके आइए, मैंने जमीन आपके लिए बनाई है। लेकिन वो सब भूल जाते हैं, हम उसके कार्यक्रम की जगह अपना तंत्र वाला कार्यक्रम देते हैं, जिससे कि शादी कुछ ना करने दिया जाए, ऐसी बात सुनकर चले जाते हैं। तो क्या ठीक है? आप खुद सोच लीजिए। आप ऐसे आराम की ज़िंदगी से, ऐसी पावरफुल ज़िंदगी से जीना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि आप कुछ मेरे देश में कुछ खाएँ? लंबे मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी बात मुँह से निकल जाती है, रुक नहीं सकता, मेरी आदत है। मैं क्या करूँ, जब मैं एक चीज़ पढ़ लेता हूँ मेरे दिमाग से निकलती नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों लोग
इन झगड़ों में फंस जाते हैं। हिंदू हैं आप, हम मुसलमान हैं आप, हिंदू राष्ट्र है ये, वो राष्ट्र है ये। ना तो हिंदू राष्ट्र ने आपको रोटी देनी है, ना हिंदू राष्ट्र ने आपको जवाब देना है, ना ही सेकुलर राष्ट्र ने आपको जवाब देना है, ना ही सेकुलर राष्ट्र ने आपको रोटी देनी है। ये तो एक मैनेजमेंट का प्रोसीजर है, हम किस तरह जीना चाहते हैं। सेकुलर आपको ये कहता है कि आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, एक साथ रहिए, देश आप सबका है। और हिंदू की आप बात करें तो हिंदुस्तान में फ्रिक्शन आ जाता है। भारत जिसे कहते हैं हम हिंदुस्तान, क्योंकि जब आप हिंदू कहेंगे तो हिंदुस्तान बोला जाता है, जो गलत है, हमारे संविधान के हिसाब से गलत है। संविधान में नहीं कहते कि वो हिंदुस्तान है, संविधान कहता है कि हम भारत हैं, हम इंडिया हैं। मैं इंडिया को भी सही नहीं मानता, क्योंकि इंडिया भी हमारे देश का नाम नहीं है, हमारे देश का नाम भारत है। यदा यदा ही धर्मस्य गल्ली यदा यदा ही धर्मस्य गल्ली था ना, एक आप कृष्ण बोलता था आत्म भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत वहाँ यूज किया गया है, वहाँ ग्लानिर्भवति इंडिया नहीं है, वहाँ ग्लानिर्भवति हिंदुस्तान नहीं है, वहाँ ग्लानिर्भवति आर्यवत नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। फिर हम इस बात को क्यों नहीं समझते। और पहला ही आर्टिकल है संविधान का, पहला आर्टिकल, जिसको आजकल धाराएं बोला जा रहा है, अनुच्छेद नहीं बोला जा रहा है। पहला आर्टिकल कहता है इस देश का नाम भारत है, इस देश का नाम इंडिया है। फिर हिंदुस्तान जबरदस्ती क्यों डालते हैं उसमें। आपको पता होना चाहिए कि हिंदू शब्द हमारी संस्कृति का नहीं है, हिंदू शब्द हिंदी में भी नहीं है, हिंदू शब्द है अरबी का। अहम कहा जाता है कि इस समय यहाँ अहम, तो उससे हिंद से हिंद बन गया, हिंदी बन गया और हिंदुस्तान बन गया। वो लोग आए थे उस समय ईरान से, इराक से यहाँ आए थे, तुर्किस्तान से आए थे, वो आए थे वहाँ खुर्दिस्तान से आए थे, जहाँ यही भाषा बोली जाती है, इसको आप उर्दू की मिक्स लैंग्वेज कहते हैं। वही लोग यहाँ आए थे आर्या का बन के, कुछ उधर से आए, कुछ इधर से आए, कुछ यूरोप से आए, खचड़ी बन के आकर यहाँ रह गए। और यहाँ जो थे द्रविड़, यहाँ नॉर्थ में रहते थे, उत्तर में रहते थे द्रविड़, डरपोक थे बेचारे, लड़ नहीं पाए, इन्होंने उनको मार मार के भगा दिया, इनको तमिलनाडु पहुंचा दिया और आंध्रा पहुंचा दिया या केरला पहुंचा दिया, जो भी पहुंचा दिया। और यहाँ आके लाट साहब बन के बैठ गए। और यहाँ पर ये बात में सारे के सारे पंडित बन गए। क्लास के कहने लगे आपको ये पंडित वही लोग हैं जिन्होंने देखा कि यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, इनको कूट काट के रख दो, हम यहाँ पर राज करेंगे। और उन्होंने किया भी, उनको आगे तोड़ा तो मुगलों ने तोड़ा, जिनसे वो खुंदक खाते हैं, और मुगलों को तोड़ा तो अंग्रेजों ने तोड़ा, जिसकी ये पूजा करते हैं। आप सोच लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। सीक्वेंस बनता दिख रहा है कि 3000 साल के पहले आसपास वर्ष में यहाँ आए थे आर्य, जो कहते हैं अपने आर्य, वो वाले बात नहीं कर रहा जो आर्यावर्त हैं, जो वो वर्त हैं आर्य वाले, जिसको एलाइट कहा जाता है, जैसे श्री राम थे या श्री कृष्ण थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ जो अपने को आर्य समाज कहता है या आर्य कहता है, जो कहता है गायत्री में एक तरफ गायत्री मंत्र भी मानते हैं, एक तरफ सूरज की पूजा भी करते हैं, अग्नि की पूजा भी करते हैं, फिर कहते हैं हम किसी चीज को मानते नहीं है, गायत्री मंत्र क्यों मानते हैं। फिर आप मत मानिए ना, आपको वो अच्छा लगता तो, लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स खेलनी है, राजतंत्र यही चलता है, हमको कैसे भी सत्ता में रहना है। मैं अब आर्य की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि उनकी मेंटलिटी क्या है। उनकी खूब कुटाई की उन्होंने, पहले इन्होंने कुटाई की इन द्रविड़िस्ट की, मतलब द्रविड़ यहाँ थे, द्रविड़ पिटे आर्यन से, और आर्यन पिटे मुगलों से, और मुगलों से मुगल पिटे अंग्रेजों से, और उसके बाद आए हम सब चोर डकैत, जिसको आज कहा जाता है काले अंग्रेज हम समझते हैं अपने आप को। उसमें चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम इनके विश्वास पे आगे नहीं चल सकते। देश इनका नहीं है, देश हमारा है। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस वालों ने आज़ादी के टाइम में, स्वतंत्रता के टाइम पे बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो सिर्फ अकेली कांग्रेस नहीं थी, पूरी जनता को कांग्रेस कहा जाता था। मैं बहुतों को बताता हूँ फेसबुक पे, भैया आपको गलत फहमी होती है, आप कांग्रेस कौन सी भी पहले समझ लीजिए। क्योंकि कांग्रेस कोई किसी का टाइटल नहीं था, बाद में टाइटल पार्टी का पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन अगर डिक्शनरी में भी, अब शब्दकोश में भी ढूंढेंगे तो कांग्रेस का मतलब मिल जाएगा। कांग्रेस होती है एक जगह लोग इकट्ठे हो जाए, हमारे देश के लोग सब एक जगह इकट्ठे हो गए थे, वाद विवाद करने के लिए, वार्ता करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कैसे आगे बढ़ा जाए, उसको कहते हैं कांग्रेस। जहां इमिग्रेशन के बाद सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं, उसको कहते हैं कांग्रेस। किसी सेमिनार को भी कांग्रेस कहा जा सकता है, किसी कॉन्फ्रेंस को भी कांग्रेस कहा जा सकता है, जहां एक तरह के लोग हो, एक ही डिसिप्लिन के लोग बैठ के बात करें, उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो उस समय हम सब एक थे, क्योंकि हम भारत के लोग थे, हमको बात थी आजादी की, स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता चाहिए थी, इसलिए हम एक जगह बैठते थे। अगर आपने कभी स्पीच सुनी हो, बड़े बड़े लोग भी थे, वो ऐसी ही बातें करते थे कि कांग्रेस उसे कहते थे जब सारी जनता देश की मिल गई, आगे बढ़ गई, चाहे वो किसी की वजह से मिली हो, उस बात को छोड़ दीजिए। हम सब एक साथ बैठे थे इसलिए कि हमको अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, हमको अपना राज लाना है। वहाँ एक ही पर्पस था, सारे एक से लोग थे, सारे भारत के नागरिक थे, और इस समय हमको ये चाहिए था कि हमारा देश अंग्रेजों के चुंगल से छूटे, ताकि हमारे आज़ादी हो, हमारे देश के जो भी संसाधन है, हमारे देश की जो भी शक्ति है, हमारे देश की जो भी पावर है, वो हमारे देश के लोग खाएं, हमारे आने वाली संस्थाएं खाएं, बच्चे खाएं, हमारे वो लोग खाएं। इसलिए सब किया गया।
वैसे तो विश्व सारा हमारा है, पूरी दुनिया हमारी, हम कहते हैं वासुदेव कुटुंब है, और वासुदेव कुटुंब तो भाई सब अंग्रेज भी हमारे थे, मुगल भी हमारे थे, सब हमारे थे, लेकिन यहाँ बात आके वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम एक छोटे लैंड की बात करें जो किसी जमाने पूरा भारत कहलाता था। आज वाला भारत वो छोटा भारत है, पूरा विश्व भारत है, भारत पूरे विश्व को आ गया है, पूरे अर्थ को भारत का आ गया है। इस बात को हम नहीं समझते हैं, नहीं वैल्यू देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी, जिनको आप मानते हैं आज वेद वाले मानते हैं, जिसको दूसरे धर्म वाले मानते हैं, जिसको रामकृष्ण वाले आप मानते हैं, वो पूरे विश्व को मानते थे। वहां कोई धर्म नहीं था, भगवान का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे अल्लाह हो या भगवान हो या कोई हो, किसी का कोई धर्म नहीं होता है। वो तो हमें समझाने के लिए अपना एक रास्ता दिखा गया जिसको हमने धर्म मान लिया। राम भी आए, उन्होंने रास्ता दिखाया, सत्यवादी हरिश्चंद्र आए, उन्होंने रास्ता दिखाया, उनसे पहले उनके पूर्वज हैं वो। उसके बाद राम आए, रास्ता दिखाया, कृष्ण ने रास्ता दिखाया, भगवान महावीर ने रास्ता दिखाया, भगवान बुद्ध ने रास्ता दिखाया, गुरु नानक जी ने रास्ता दिखाया, मोहम्मद साहब ने रास्ता दिखाया, सबने रास्ता ही दिखाया। सब चले गए, कोई रहा नहीं इस दुनिया में। रास्ता दिखा के जाना ही पड़ता है, क्योंकि उनका काम रास्ता दिखाना था। लेकिन हम आज तक नहीं समझ पाए कि रास्ता सच कौन सा है, गलत कौन सा है। रास्ता एक ही है, समझने का फेर है। कोई रेड लाइट नहीं है बीच में, कोई ट्रैफिक नहीं है बीच में, कोई कंट्रोल नहीं है, रास्ता एक ही है। लेकिन हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। ये कमीने राजनीति वाले सारे के सारे नहीं चाहते कि हमें समझ जाएं, क्योंकि जैसे हम समझ गए हम देश के नागरिक बन गए। अभी तक हम नागरिक नहीं बने हैं, क्योंकि हम इसी उथल पुथल में हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, तू बड़ा मैं छोटा, वो बड़ा ये छोटा वो छोटा ये हरिजन। जब तक हम इसी उथल पुथल में रहेंगे, इन लोगों की लॉटरी चलती रहेगी। चाहे वो बीजेपी की लॉटरी कुर्सी हो, चाहे वो कांग्रेस की कुर्सी हो, या दूसरे चोर डकैत तो सबकी कुर्सी हो, उनकी कुर्सियां कभी खत्म नहीं होंगी। हम खत्म हो जाएंगे, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, हम मर जाएंगे, लेकिन ये वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि ये उनकी दुकान है, ये उनका माल है, ये उनका बिजनेस है, ये उनकी फैक्ट्री है, ये उनकी इंडस्ट्री है, ये सब कुछ है। बचपन से लेकर आखिर तक ये और उनके बच्चे इसी में रह जाएंगे। आप कर लीजिए इंजीनियरिंग की डिग्री, आप कर लीजिए मैनेजमेंट की डिग्री, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे छोटी सी नौकरी के अलावा। लेकिन ये लोग बाहर पढ़ के आते हैं, फिर दिखाते हैं हम ऑक्सफोर्ड से करके आए हैं, हम वहां से करके आए हैं। अरे आप करके आए तो क्या हो गया, यहाँ भी तो लोगों ने की है। क्या फर्क है दोनों में? इंजीनियर यहाँ से बने, अमेरिका से बने, दोनों एक ही चीज सीखते हैं, कोई फर्क नहीं होता। बेंडिंग में भी वही फार्मूला है जो यहाँ है वो अमेरिका में है, शेयर फोर्स का फार्मूला जो यहाँ है वो अमेरिका में है, किसी मशीन डिजाइन का फार्मूला जो यहाँ है वो अमेरिका में है। कोई फर्क नहीं है, बस गोली चमड़ी का फर्क है, पासपोर्ट का फर्क है, सर्टिफिकेट का फर्क है। ओ मैं वहां से हूँ, उससे बात करोगे तो आता जाता कुछ थे, पर मैं वहां से हूँ, ये बात मेरा चैलेंज है। कोई फर्क नहीं होता, शिक्षा शिक्षा है, आप कहीं से भी लेके आए, पर कॉग्निशन का फर्क है। वही बात है, राजनीति बीच में आ जाती है। अमेरिका समझता है मैं दुनिया का मालिक हूँ और मैं सब कुछ हूँ। समझ क्या होता है, मालिक तो दुनिया का एक ही है, ऊपर वाला। आपको उसने बनाया है तो उसको मुझे भी बनाया है, आपको उसने जमीन दी है तो उसने मुझे भी जमीन दी है, आपने उसको रिसोर्सेस दिए तो उसने मुझे भी दिए हैं। कोई फर्क नहीं है, उसने किसका इंसाफ ही नहीं किया। लेकिन हम आपस में लड़ते रहेंगे, क्योंकि मैं राजा हूँ तुम मेरे गुलाम हो, नहीं तुम गुलाम हो मैं राजा हूँ। और जबकि कोई राजा गुलाम नहीं है। ऊपर जाके आप किस लाइन में बैठे हो आपको मालूम भी नहीं है। हो सकता है जो है सबसे छोटा देश हो, सबसे छोटा काम करता हो, वो आपका हेड बन जाए, आप जान भी नहीं पाएंगे। करते रहिए, नाचते रहिए, यहाँ दिखाते रहिए अपनी शक्ति इस जमीन पे, लेकिन इस शक्ति आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये शक्ति कुछ साल के लिए होती है। ऊपर जाके आपको इतना मालूम होगा कि आप किस खेत की मूली हैं, आप किस खेत के अमेरिकन हैं, आप किस खेत के भारतवासी हैं। वहां जाके पता लगेगा, आपकी फाइल खुलेगी, आपकी चोरी वहां सामने आएगी, आपकी डकैतियां सामने आएंगी, आपकी क्रिमिनलाइज वर्क सामने आएंगे। आपने किस लोगों को लूटा, आपने किस लोगों के अधिकार छीने, आपके किन लोगों को सताया, वो सब भाव जब खुलेगा तो आपको पता लग जाएगा। आप कह सकते कि मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूँ, हाँ मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूँ। काल्पनिक बातों से ही काम किया जाता है। हम कल्पना ही करते हैं, फार्मूले बनाते वक्त हम सोचते हैं, रेज्यूम करते हैं, हम इसको ये मान लेते हैं, हम उसको वो मान लेते हैं, उसके बाद रियलिटी आते हैं, वो अप्लाई होती है। कल्पना ही सही आप कह दीजिए, लेकिन सच्चाई भी कल्पना है, जिंदगी भी कल्पना है, जन्म लेना भी कल्पना है, मृत्यु भी कल्पना है, पूरी जिंदगी ऐश करना भी कल्पना है, और पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करना है। ऐसा क्या है जो कल्पना नहीं है? आसमान देखते हैं, हम जाते हैं, कभी आसमान में गए आज तक? कितने डिस्टेंस है? ऐसे देखा है? मैं कहता हूँ 2 × 10⁻23 किलोमीटर से आप मान लेंगे। मैं कहता हूँ 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ से सूरज। तो आप किसी नाप के तो नहीं देखा है, जूम किया है, फार्मूला के देखा होगा। 8 सेकंड में सूरज की लाइट जमीन पे आती है, तो लगा लीजिए कितनी स्पीड है लाइट की। सोचा 7200 करोड़ किलोमीटर की स्पीड से, 7200 करोड़ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूरज की लाइट जमीन पे आती है। आपको ऐसा सोच बना सकते हैं कि इतनी देर से लाइट आ जाए तो आप क्या समझते हैं हम पावरफुल, हम माइटी हैं? अरे आप वो चीज नहीं दे सकते जो वो देख के बैठा है।
आप होंगे बड़े वैज्ञानिक, आप होंगे बड़े पावरफुल कंट्री, आप होंगे कुछ भी, लेकिन आप कुछ भी नहीं। अगर इस बात से कंपेयर किया जाए तो ये 12,600 किलोमीटर डायमीटर जमीन के अंदर कितना छुपा हुआ है। आप 10 किलोमीटर भी नीचे नहीं जा सकते हैं तो मुझे बताइए। आज समुद्र का तल 4 किलोमीटर होता है और जो ऑक्सीजन होता है उसका तल सागर तो 10 किलोमीटर होता है। आपको तेल निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप सोच लीजिए। और आपको कोई कह के जाइए 20 किलोमीटर नीचे जाके दिखा दीजिए, कोई जा सकता है, वहाँ कमरा बना सकता है। मैं कहता हूँ जाइए 10 किलोमीटर जाइए, जमीन दीजिए, कमरा बना के दिखा दीजिए, आप जा सकते हैं। लेकिन आप चांद पे जाने को तैयार है, ठीक है, आप जाइए, चांद पे जाइए, सूरज पे जाइए, सच के लिए कुछ भी, लेकिन इस बात पे घमंड मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है, कोई कमी नहीं छोड़ी है उसने। हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम सब तोड़ के निकाले जा रहे हैं। पेट्रोल निकल के खा गए, डीजल निकल के खा गए, मिट्टी का तेल निकल के खा गए, पानी का बर्बाद कर दिया, सारी जमीन खोद दी, सब कुछ खराब कर दिया, कंप्यूटर निकाल दिया, सोना निकाल लिया, चांदी निकाल, सब कुछ लूट के खा गए। उसे ये कहा था इसको निकाल के खा जाना। फिर कहते हैं हम इकोनॉमिक शास्त्री हैं, हम इकोनॉमिक सबसे आगे हैं, अर्थशास्त्र ये है, हमारी जीडीपी इतनी हो गई। अरे तुम्हारा इसमें क्या है? तुमने अपने सर्वाइव के लिए, अपने ऐश आराम के लिए किया है, नहीं चले सब कुछ दिया है। आप नहीं पानी की बूंद भी बनाई नहीं कभी। आप कहेंगे पानी की बूंद बना सकते हैं, हम साइंटिस्ट हैं, बना के दिखाइए, बिना हाइड्रोजन ऑक्साइड ला के दिखाइए। आप एक हवा का पार्टिकल बना के दिखा दीजिए, नहीं बना सकते आप। मैं भी वैज्ञानिक हूँ, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन सच सच है। आप एक बॉडी शरीर बना के दिखा दीजिए, आप एक मस्तिष्क बना के दिखा दीजिए। कहेंगे रोबोट काम करता है, रोबोट ऐसे काम नहीं करता है। अब रोबोट के अंदर आत्मा नहीं होती है। आप मेरी आत्मा जो मेरे शरीर में, आप ऐसे शरीर बना के दिखा दीजिए। आप कुछ नहीं बना सकते बातों के अलावा। खैर मैं बहुत दूर पहुंच गया बातों में, बात तो अच्छी बात नहीं, बात अब संविधान की कर रहे हैं, भारत के उसी के बारे में बात करें तो अच्छा रहेगा, सही रहेगा। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कभी कभी ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता, कई बार मैं भी ज्यादा बोल जाता हूँ, मुझे क्षमा चाहता हूँ आप लोग से, लेकिन क्या करूँ, दिमाग में आती बोलना पड़ता है, माइंड को लिंक करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन शुरू कहते हैं, माइंड चलता है तो बोलना पड़ेगा। मेरे हाथ में नहीं है माइंड को रोकना, अगर माइंड रोक दूंगा मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आवश्यक माइंड में कुछ आती है एक्सप्रेस करना अच्छा होता है, ताकि हो सकता है उसमें से कोई चीज अच्छी निकल आए। आपके काम क्या है, बहुत जरूरी है सोचना है। इसलिए मैं देश के नागरिकों को खासतौर से उन लोगों को जो इंग्लिश नहीं समझते वजह, संविधान को समझो। ये आपकी जीवन की आत्मा है, आपके शरीर की आत्मा की बात नहीं कर रहा मैं। शरीर की आत्मा आपके लिए है, वो आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके काम के लिए, आपके देश का हो गया है। लेकिन वो आत्मा जो उस देश को चलाएगी आगे के लिए भी, आप चले जाएंगे कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद, लेकिन जो यहाँ रहेंगे और उसके बाद वो भी चले जाएंगे, और फिर जो रहेंगे, देश तो हजारों लाखों साल से चला आ रहा है। पृथ्वी जब से है देश तब से, सारे देश तब से, नाम बाद में बदले, क्या हुई, जमीन तो थी, जमीन हाथ से तो नहीं है। अपने हिस्से को आगे कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए संविधान तैयार हुआ, जिसको आज कुछ लोग बैठे हैं कहते हैं इसको हटा दो। अरे खुद हट जाओगे आप क्या संविधान हटाओगे? आपकी औकात क्या है? आप बीजेपी वाले हो चाहे आप कोई भी हो, आपकी क्या औकात है संविधान के सामने? आप हो क्या चीज? क्या छोले कुलचे भेंटते हो आप? संविधान है, वो देश की आत्मा है, देश के लोगों के अधिकार हैं। आप उसे चैलेंज करेंगे, आप खुद भाग जाएंगे यहाँ से, आपको कोई लात मारेंगे, खुद अपने आप को लोग आपको भगा देंगे यहाँ से। आप क्या कहते हैं कि हम वो लाएंगे, हिंदू बनाएंगे राष्ट्र को? अरे राष्ट्र को राष्ट्र रहने दो, राष्ट्र को जो है उसे रहने दो। हिंदू बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, पागलपन है। हिंदू का शब्द आप जानते तो ऐसी बातें नहीं करते, आप हिंदू के बारे में जानते तो ऐसी बातें कभी भी नहीं करते, क्योंकि आप गधे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बकवास कर रहे हो। जैसे कम हो जाते हैं, काय 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 करते हैं, आप एक क्राउड हो, क्राउड का मतलब भीड़ हो। आप बीजेपी वालों, भीड़ जनता पार्टी हो आप, भीड़ जनता पार्टी, भीड़ का मतलब भेड़ चाल हो। आपको कुछ दिमाग नहीं है, आपको सोचने की शक्ति नहीं। RSS वाले आप भी सुन लो, आप भी वही हो जो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी आपका बच्चा ही तो है। एक भंग वाली पार्टी, एक भीड़ वाली पार्टी, एक कौओं वाली पार्टी है। काव 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 करते रहो, सोचो कुछ मत। और कांग्रेस वाले गुमसुम बदतमीज लोग, कुछ नहीं कर रहे विरोध। अरे तुम्हारा बनाया हुआ सब कुछ को तोड़ रहे हो, तुम देख रहे हो, बस प्रेस पे आगे बात कर दी। अरे ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। आपको क्या तकलीफ हो रही है संविधान से, आपको क्या प्रॉब्लम है, इससे जरा बता सकते हैं बीजेपी वालों? आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था इस संविधान में जो आपको तकलीफ हो रही है कि काम नहीं कर रहा है? आपने इसको बनाया नहीं, आपने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया नहीं, आप इस देश के बारे में कुछ जानते नहीं, लेकिन हर जगह आप बैठना चाहते हैं। इसे कहते हैं दादागिरी। और आपने पब्लिक को बेवकूफ बना रखा है, हम ये भी जानते हैं, और पब्लिक बेवकूफ बन भी गई आपकी बातों में आके, हम ये भी जानते हैं, क्योंकि पब्लिक इमोशनल होती है, भावनात्मक होती है। आपने उनकी भावना को कैश कर लिया,
लेकिन पब्लिक भी कब तक आपका साथ देगी? जब तक ये आपका साथ देगी जब वो जान लेगी कि आपने गलत कहा था। जिसने वो जान लिया आपने गलत कहा तो आपके सर पे हथौड़ा भी वो मार सकती है। ये पब्लिक है। जब तक अंधेरे में रखोगे अंधेरे में रह लेगी कुछ दिन, लेकिन अंधेरे में हमेशा नहीं रह सकती। इसी पब्लिक ने बीजेपी को छोड़ो अंग्रेजों को भगाया था, इसी पब्लिक ने मुगलों से भी टक्कर ली है, इसी पब्लिक ने सब डकैतों से भी टक्कर ली है। ये पब्लिक जब खुलती है तो सोने से नींद छूट जाती है। आज ये सो रही हम जानते हैं, सारी पब्लिक सो रही है और सिर्फ बार बार मैं कहता हूँ, हमें सोने वाला देश है, स्लीपिंग सोसाइटी है और हम हैं, हम स्लीपिंग सोसाइटी हैं, हम सीरियस नहीं हैं, हम अंधेरे में हैं। एक दिन तो जाएगा अंधेरा, रात खत्म होती है तो सूरज निकलता ही है, रोशनी आती ही है। आप तब क्या करेंगे? आप ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे सूरज की रोशनी में बाकी रोशनी गायब हो जाती है। आप अपने आप को नया भारत नया इंडिया बनाने की बात करते हैं, आप खुद क्या है पहले ये देख लीजिए, आपको नॉलेज कितनी है पहले ये देख लीजिए, आप में दिमाग कितना है पहले ये देख लीजिए, आपकी शक्ति कितनी है पहले देख लीजिए, आपकी सच्चाई कितनी है पहले देख लीजिए। आप लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, अगर करनी है तो देश की सेवा कर दीजिए, नहीं तो देश आपको वो सबक सिखा देगा कि आप याद रखोगे। देर जरूर करता है देश, लेकिन बेवकूफों का देश नहीं है ये। इस देश ने बहुत पुराने पुराने लोग देखे हैं, ये देश पागलों का नहीं है। जब तक ये देश नहीं सोचता है तभी तक आप ऐश कर लीजिए, जब ये देश सोचेगा तो बहुत आ गए मोदी और बहुत आ गए अमित शाह। कौन पूछता है तुम्हें यार? जाओ छोले बेचो, कुलचे बेचो, जो मर्जी करो, पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ। अपनी औकात में रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पब्लिक है मालिक है इस देश की। आपकी बातों में कभी कभी आ गई, इसका मतलब ये कि हमेशा आ जाएगी। ईवीएम हमेशा साथ नहीं देगी आपका, इलेक्शन कमीशन हमेशा साथ नहीं देगा, साथ तो पब्लिक ही देगी। उस सरकार का जो काम करेगी, सरकार पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक सरकार के लिए नहीं होती है। आप एक बार चीटिंग करके आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं, कब तक रहेंगे आप? ऊपर आपको भी जाना है, कुछ चले भी गए और कुछ जाएंगे, क्योंकि सब हमेशा नहीं रहते। कांग्रेस के भी चले गए, आपके भी जाएंगे। ज्यादा घमंड मत करो, ज्यादा दादागिरी मत दिखाओ, इंसान को इंसान समझो, आदमी को आदमी समझो। आपने जो समझ रखा है कि हम लोगों को दबा देंगे, जैसे कश्मीर में आपने दबाया है, ये चलने वाला खेल नहीं है। ये आप गलतियां ऐसी कर रहे हैं जो आपको ये सब के रिजल्ट भुगतने भी होंगे। याद रख लेना, हमेशा सब कुछ सही नहीं रहता है। आपकी दादागिरी कभी नहीं रहेगी। बड़े बड़े दादा आया चले गए। इंसान समझो, मानव समझो, आत्मा को आत्मा समझो। किसी की आप आत्मा दिखाओगे, किसी के ऊपर दादागिरी दिखाओगे, कमजोर के ऊपर आप दिखा सकते हो, ताकतवर के ऊपर दिखा के जाइए ना। जो आप करते हैं ताकतवर को दबाइए, आप पता लगेगा कितनी शक्ति है आप में। कर्फ्यू लगा दिया, बंद कर दिया, आने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, ये आपकी ताकत है, ये आपका डर बताता है। डर आपके अंदर डर है, आप डर रहे हैं उससे, ये लोग हमें मार ना दे। अरे कैसे डरपोक हो आप? इतनी सी पब्लिक को आप नहीं संभाल पाए, बातें करते हो बड़ी बड़ी। एक छोटी सी पब्लिक, 1 करोड़ लोग, उनसे आप बात करने की शक्ति नहीं रखते। अपनी जमीन वो लेके आए थे, आपकी जमीन तो नहीं ली उन्होंने आके, आपसे भीख तो नहीं मांगी थी उन्होंने आके, आपके यहाँ शेल्टर तो नहीं रहता उन्होंने, अपनी जमीन लाए थे, अपनी जमीन पर रह रहे हैं, आपका क्या है? लेकिन नहीं, आपने दादागिरी दिखानी है, आपने दुनिया को दिखाना है, देखो मैं क्या चीज हूं। ये चीजें ज्यादा चलती नहीं है। इंसान बनो। वैसे आप बात करते हैं हिंदू की, हिंदू का मतलब आप जानते भी नहीं है। बात करते हैं राम की, राम का मतलब जानते भी नहीं है। अगर जानते होते तो ऐसे नहीं करते। ये जो आपने किया है, जुर्म किया है इंसानियत के खिलाफ। इसलिए मैं कह रहा हूं, होश में आ जाओ। भारत है ये दूसरा देश नहीं है। जिस दिन ये खुलेगा तो ज्वालामुखी फटेगा और आप भी उसमें डूब जाएंगे। पता भी रहेगा कि मैग्मा में गए, लावा में गए, मालूम भी नहीं पड़ेगा आपका। इसलिए सोच लो। खैर, हमें ज्यादा लंबा क्यों बोलो, हिंदी की बातचीत मैंने करनी थी कर लिया। मैं आगे चलता हूँ। I will go now forward towards talking of this constitution for 15 minutes or whatever time I have, and we'll see about relations between union and states. This is Article 245, and this is legislative relation, distribution of legislative powers, and this is Article 245(1). Subject to provisions of this Constitution, Parliament may make laws for whole or any part of territory of India, and legislature of a state may make laws for whole or part of state. ये पहला है 241A. Again, I read this for you because it is important one. Subject to provisions of this Constitution, Parliament may make laws for whole or any part of territory of India, and legislature of a state may make laws for whole or any part of state. And then no law made by Parliament shall be deemed to be invalid on ground that it would have extraterritorial operation.
This is another part in that. Let's some water on top of what is very thirsty in this morning. 246. 246 states, notwithstanding anything in clause 2 and 3, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of matters enumerated in list 1 in 7th schedule in this constitution referred to as Union list. Means Parliament has full power to enact laws for matters enumerated in Union list, that is list 1, and that is in 7th schedule. Then, notwithstanding anything in clause 3, Parliament and subject to clause 1, legislature of any state also have power to make laws with respect to any of matters enumerated in list 3 in 7th schedule in this constitution referred to as concurrent list. Then, subject to clause 1 and 2, legislature of any state has exclusive power to make laws for such state or any part thereof with respect to any of matters enumerated in list 2 in 7th schedule in this constitution referred to as state list. Then 4. Parliament has power to make laws with respect to any matter for any part of territory of India not included in a state, notwithstanding that such matter is matter enumerated in state list. Again, this is very important. Parliament has power to make laws with respect to any matter for any part of territory of India not included, notwithstanding that such matter is matter enumerated in state list. Then we go to 247, Article 247. Notwithstanding anything in this chapter, Parliament may by law provide for establishment of any additional courts for better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in Union list. Then we go to 48 to 48. Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in concurrent list or state list. Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in concurrent list or not enumerated in state list. Such power shall include power of making any law imposing a tax not mentioned in either of those lists. Article 249. Notwithstanding anything in foregoing provisions of this chapter, if Council of States has declared by resolution supported by not less than 2/3 of members present and voting that it is necessary or expedient in national interest that Parliament should make laws with respect to any matter enumerated in state list specified in resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for whole or any part of territory of India with respect to that matter while resolution remains in force. Then a resolution passed under clause 1 shall remain in force for such period not exceeding 1 year as may be specified therein, provided that if and so often as a resolution approving continuance in force of any such resolution is passed in manner provided in clause 1, such resolution shall continue in force for a further period of 1 year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force. A law made by Parliament, which Parliament would not put for passing of a resolution under clause 1 have been competent to make shall, to extent of incompetency, cease to have effect on expiration of a period of 6 months after resolution has ceased to be in force
except as respects things done or omitted to be done before expiration of said period. Once again, I read this. A law made by Parliament, which Parliament would not, but for passing of a resolution under clause 1, have been competent to make shall to extent of incompetency cease to have effect on expiration of a period of 6 months after resolution has ceased to be in force, except as respects things done or omitted to be done before expiration of said period. Then Article 250. Article 250, let me just put fine on. Notwithstanding anything in this chapter, Parliament shall, while a proclamation of emergency is in operation, have power to make laws for whole or any part of territory of India with respect to any of matters enumerated in a state list. A law made by Parliament, which Parliament would not, but for sheer of proclamation of emergency, have been competent to make shall to extent of incompetency cease to have effect on expiration of a period of 6 months after proclamation has ceased to operate, except as respects things done or omitted to be done before expiration of said period. Then 251. It's very important law. It's inconsistency between laws made by Parliament and state. Nothing in this article, nothing in Article 249 and 250 shall restrict power of legislature of a state to make any law which under this constitution it has power to make, but if any provision of a law made by legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by Parliament, which Parliament has under either of said articles power to make law made by Parliament, whether passed before or after law made by legislature of a state, shall prevail, and law made by legislature of state shall to extent of repugnancy, but so long only as law made by Parliament continues to have effect be inoperative. 252. If it appears to legislature of two or more states to be desirable that any of matters with respect to which Parliament has no power to make laws for states except as provided in Article 249 and 250 should be regulated in such states by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all houses of legislatures of those states, it shall be lawful for Parliament to pass an act for regulating that matter accordingly, and any act so passed shall apply to such states and to any other states by which it is adopted. Afterwards, by resolution passed in that behalf by house, or where there are two houses, by each of these houses of legislature of that state. Then we go to, and any act so passed by Parliament may be amended or repealed by an act of Parliament passed or adopted in like manner, but shall not, as respects any state to which it applies, be amended or repealed by an act of legislature of that state. Notwithstanding anything in foregoing provisions of this chapter, Parliament has power to make any law for whole of any part of territory of India, for implementing any treaty, agreement or convention with any other country, for countries, or any decision
made at any international conference, association or other body. 254. If any provision of a law made by legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by parliament, which parliament is competent to enact or to any provision of an existing law with respect to one of matter enumerated in constitution concurrent rest, then subject to provisions of clause 2, law made by parliament, whether passed before or after law made by a legislature of such state, or as case may be, existing law shall prevail and law made by legislature of a state shall to extent of repugnancy be void. Means parliament law shall terminate. That's all. Where a law made by a legislature of a state where a law made by a legislature of a state with respect to one of matters enumerated in concurrent list contains any provision repugnant to provisions of an earlier law made by parliament or an existing law with respect to that matter, the law so made by legislature of such a state shall, if it has been reserved for consideration of president and received his assent, prevail in that state, provided that nothing in this clause shall prevent parliament from enacting at any time any law with respect to same matter, including a law adding to, amending various or repealing laws such so made by the legislature of state. Article 255. No act of parliament or of legislature of a state and no provision in any such act shall be invalid by reason only that some recommendations or previous sanction required by constitution was not given. If assent to that act was given, where recommendation required was that of governor, either by governor or by state, where recommendation required was that act of Raj Pramukh, either by Raj Pramukh or by president. Where recommendation or previous sanction required was that of president by president. Now we come to administrative relations. These were legislative relations. Now administrative relations, which is also a very important part from government's viewpoint. Administrative relations, this article 256. Executive power of every state shall be so exercised as to ensure compliance with laws made by parliament and any existing laws which apply in that state, and executive power of the union shall extend to giving of such directions to a state as many appear to government of India to be necessary for that purpose. 257. Executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice exercise of executive power of union
And executive power of union shall extend to giving of such directions to a state as may appear in government of India to be necessary for that purpose. Sorry. Executive power of union shall also extend to giving of directions to a state as to a construction and maintenance of means of communication. Relation, okay. Maintenance and means of communication declared in direction to a national or military importance, provided that nothing in this clause shall be taken or restricting power of Parliament to declare highways or waterways to be national importance, or national waterways or power of union with respect to highways or waterways so declared, or power of union to construct and maintain means of communication as part of its functions with respect to naval, military and air force works. Then executive power of union shall also extend to giving of directions to a state as to measures to be taken for protection of of railways within state, wherein carrying out any direction given to state under clause 2 as to construction or maintenance of any means of communication or rubber, or under clause 3 as to measure to be taken for prioritization, sorry, wherein carrying out any direction given to a state under clause 2 as to construction of maintenance or maintenance of any means of communication, or under clause 3 as to measures to be taken for protection of any railways costs, and or under clause 3 as to measures of be taken for protection of any railways costs have been incurred in excess of those which would have been instructed to in the okay. I feel sometime in depth study better. No, it's no use sometimes just to read, means you have to think also sometimes. I have not thought. Okay. So let us say, as to measures to be taken for protection of the railway costs have been incurred in excess of those which would have been incurred in discharge of normal duties of state, if such direction had not been given, they shall be paid by government not being given. They shall be government, paid by government of India to state such sums as may be agreed upon, or in default of agreement as may be determined by an arbitrator appointed by State Chief Justice of India in respect of extra costs so incurred. Then Article 2 for 58 to 58(1). Notwithstanding anything in this constitution, President may, with consent of government of a state, entrust either conditionally or unconditionally to that government or to its officers functions in relation to any matter to watch execution of property of union steps. Then a law made by Parliament which applies in any state may, notwithstanding
that it relates to a matter with respect to which legislature of a state has no power to make a law, confer powers and importance, duties, or authorize the territorial conference. Okay. Confer powers and impose duties or authorize conferring powers and imposition of duties upon state or officers and that author, authorities thereof. When by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon under a uh, so let's know whereby the virtue of this article, powers and duties have been conferred or imposed upon a state or officer or authorities thereof, they shall be paid by Government of India to state such sum as may be agreed or in default of agreements as may be determined by an arbitrator appointed by Chief Justice of India. Hmm. Chief Justice of India in respect of any extra cost of administration incurred by state in connection with the excuse of house. 258 is running right. Okay. 258A. It's very lazy actually, very boring subject, but we have to know it. I know you would not see, that's why I'm speaking on your behalf. 258A, notwithstanding anything in Constitution, the Governor of State may, with consent of Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that government or its officers functions in relation to any matter to which extraneous pressure of state extends. Then 260, Constitution of India, Article 260. Government of India may by agreement with government of any territory not being part of a territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in government of such territory, but every such agreement shall be subject be, to and governed by okay. So once again, Article 260, Government of India may by agreement with Government of any territory not be part of territory of India undertake an executive, legislative or judicial functions vested in government of such a territory, but every such agreement shall be subject to and governed by any law relating to exercise of formal function, formal jurisdiction for time being in force. Then 261. Full faith and credit shall be given. Full faith and credit shall be given throughout territory of India to public acts, records, and judicial proceedings of Union and of every state. Then manner in which and conditions under which acts, records, and proceedings referred to in clause 1 shall be proved and effect thereof determined shall be as provided by law made by Parliament. Final judgments or orders delivered or passed by civil courts in any manner any part of the trajectory of India shall be capable of execution and where within that territory according to law. Final judgment of orders delivered or passed by civil courts in any part of territory of India shall be
shall be capable of execution anywhere within that territory according to law. Disputes according and relating to waters. This is something different, but let us read. It is only 2 paragraphs. Better we understand that. 262. Parliament may by law provide for adjudication of any dispute or complaint with respect to use, distribution, or control of waters of or in any interstate river or river valley. Notwithstanding anything in this constitution, Parliament may by law provide that neither Supreme Court nor any other court shall exercise over jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in default. Let me read it again. Parliament will by law provide for adjudication of any dispute or complaint with respect to use, distribution, or concern complaint known as Okay, then after this is coordination between states. Coordination between the states is also is not very long, so I can just read it for you. 263. If at any time it appears to President that public interest would be served by establishment of council charged with duty of inquiring into and rising upon disputes which may have arisen between states, investigating and discussing subjects in which some or all of states or union and one or more of states have a common interest, or making recommendations upon any such subject, and in particular recommendations for better coordination of policy and action with respect to that subject. It shall be lawful for President by order to establish such a council and to define in nature of duties to be performed by it and its organization. Well, this finance, property, contracts and suits, maybe you will not find any interest in this, so I'm just for time being leaving this ahead. Then distribution of revenue between the union and state use is well also. Taxes in, only taxes. I think I should leave this because it's very boring and more boring. And it's in properties. Alright, we'll leave it now with taxes also because these are not for much use to common man. And we'll see what chapter has access later on. And the miscellaneous financial provisions, it's same financial methods. Of course, there are so many pages of this, but no need of giving to all. Okay, let's go further and see finance and finance. It moves finance only. Then is borrowing. The finance and borrowing are same. Then is chapter 3, property, contracts, rights, liabilities, obligations. All right, properties, contracts, rights, liabilities, and obligations. As the Article 294, as from commencement of this Constitution, all property and assets which immediately before such commencement were invested in His Majesty for purpose of Government of Dominion of India, and all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for purposes of government of each government shall vest respectively in Union and corresponding states. And
all rights, liabilities, and obligations. Alright. All rights, liabilities, and obligations of Government of Dominion of India and of Government of such Governor's province, whether as arising out of any contract or otherwise, shall be rights, liabilities, and obligations respectively of Government of India and Government of each corresponding state, subject to any adjustment made or to be made between by reason of creation before commencement of this Constitution of Dominion of Pakistan or of provinces of West Bengal, East Bengal, West Punjab, and East Punjab. 295. As from commencement of this Constitution, all property and assets which immediately before such commencement were vested in Indian state corresponding to state specified in Part B of first schedule shall vest in Union with for purpose for which such property and asset were held immediately before such commencement will therefore be pursued of Union. Then we go to all rights and liabilities and other all rights, same thing. There is some 296 which is subject to hierarchy. Okay, now let us see where else we can stay on this. I don't find any big matter for you to check into that. Waste of time. Why we should? Okay, then part 11, trade, commerce, and intercourse within territory of India. This is trade. I think we have covered mostly required chapters in this constitution, which are which are of interest to us. There is services in the union, so this is also not a serious. So what I say, we have covered almost required chapters from constitution of this country, which are directly applicable to people of this country, and we have not covered each and every aspect of other issues which are not directly connected to public. So I think for that time being, we will like to stop this reality show. I like to take up professionally now, and let me say what is left, because they may be feeling bored while we're just wasting our time. I don't want to waste time of people. I think almost it's over. Let us see. I think we should let students there. Okay. So, my friends, whatever is linked to you directly as a citizen of this country, I have covered that portion. I don't want to take all portions which are not directly linked, because you will waste time and you can read yourself if you are interested in. My purpose was to acquaint all those with awareness of constitution of this country, which is very important to be understood. And once you understand this, you shall apply it in your life for fighting of your rights, for doing your duty, for understanding your politicians, for understanding parliament, for understanding president, vice president, and our leaders, our political parties, our citizens, and yourself. You may be leader tomorrow, who knows? You may be elected MP, MLA, you may be chief minister, you may be prime minister, you may be whatever. To know about that is very important, and on top of that, we have to know about how to elect them.
That is another point which is very, very important point. If we don't know how to elect our leaders, means we cannot elect good leaders. Vote is only a medium, nothing else. It's only a way to tell the world that we have voted and that person shall be elected or rejected. This means we are living through vote. We are talking about votes and staying here like that. That is not acceptable. We have to consider each and every point of life in this. It's not simply that I'm talking of in a way we should not talk or we should just lecture or like, no, it's not that. I'm not interested in lectures. I'm only interested because this subject was not taught in our colleges, civics or some others. Yes, something was taught in civics and economics. We will not learn, except those students who are from economics, engineering student, medical student, although they have had a chance to understand economy, but it should be understood. And I'm also calling those economists that don't really depend upon data, depend upon roles, resources that we have. We have limited resources endowed on us by nature, and we have to use them optimally, not throw them and not destroy them. And at first we extract that, and it destabilizes the equilibrium of Earth, of lithosphere. We call it lithosphere for Earth. I'm just telling you, Earth is lithosphere plus aerosphere. Earth means solid part from aero part that was to Earth. Earth is lithosphere. Lithosphere, Litho, litho, sphere, sphere. Lithosphere is real Earth and total Earth is lithosphere plus aerosphere. That is called Earth. This Earth should be considered very correctly. People interested in this talk of this here. अब मैं उन सबसे बता दूं, भारत के उन लोगों से, भारत के उन सबसे जो वास्तव में संविधान की बातें करते हैं, चाहे बड़े से बड़े वकील हों, वो अपनी एक लिमिट तक बात करते हैं, जिस केस को उनको लड़ना उसकी बात करते हैं। हालांकि उनको बड़ा सख्त होता है, पास भी सबने किया होता है, लेकिन पास करने अब भी सब कुछ नहीं होता है। पास तो 50% मार्क्स आगे हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो हिस्सा आपने नहीं किया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये क्वेश्चन उठता है। आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, आप लीडर भी बनना चाहते हैं, आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप लड़ना नहीं चाहते हैं। अब आप कहेंगे क्यों लड़े भाई, अब काम चल जाता है। ऐसे आपका काम चलता होगा क्योंकि आपको लोग जानते होंगे, आप पैसे वाले हैं, आपसे कोई बेनिफिट हुआ होगा, इसलिए आप ये बात नहीं करना चाहते। लेकिन एक साधारण नागरिक तो छोटे से छोटा काम करता है, ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, उसको 2 वक्त की रोटी खानी है, सीधे साधे कपड़े पहनने, अपने बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, उसके लिए कुछ पता नहीं कि देश में क्या हो रहा है। वो सोचता है जो प्रधानमंत्री ने कर दिया ठीक है, जो मंत्री ने कर दिया ठीक है, जो ये लोग बोल रहे हैं ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो रिक्शा चलाना है और ठोक के खाना है। उसे नहीं पता कि उसके अधिकारों का कहाँ मर्डर हो गया, उसके अधिकार छीन लिए गए, उसको बोलने की शक्ति नहीं है, वो बोल भी नहीं सकता है, और जो बोल नहीं सकता है वो लिख भी नहीं सकता है, और जो ना बोल सकता है ना लिख सकता है तो किसके आगे रोएगा अपनी प्रॉब्लम को, अपनी मुसीबत को? कोई पूछने वाला नहीं है इस देश में। जिसकी शक्ति है, जिसकी एसोसिएशन है, जिसकी सोसाइटी है, जिसके संगठन है, वो शोर मचा देते हैं साथ में खड़े होके, लेकिन जो कुछ भी नहीं है उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं चाहता हूं उन लोगों को जिनको कोई सुनने वाला नहीं है वो बोलना शुरू करें, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करेंगे, वो आवाज उठाना शुरू करेंगे, तो बड़े से बड़े दरख्त गिर जाएंगे, बड़े से बड़े लीडर्स गिर जाएंगे, बड़े बड़े तोपें गिर जाएंगी अगर वो बोलेंगे तो, क्योंकि वही इस देश के मालिक हैं, उन्होंने ही इस देश को बनाया है। आज अगर गरीब इस देश में है तो सबसे ज्यादा गरीब है, मिडिल क्लास है, और अमीर तो थोड़े से हैं कुछ लोग जो अपने को देश के मालिक समझते हैं। और ये लीडर्स की तो औकात कितनी है, कुछ गिनती के 50-20-30 हजार होंगे, अगर आप MP मिला लेंगे तो 750 है, पार्लियामेंट में 800, और वैसे होंगे 7-8 हजार होंगे, और कितने MLA होंगे टोटल आप कह लीजिए 25-30 हजार लोग जो देश को चला के खा गए। MLA भी थे, वो काउंसलर भी थे, वो MP भी थे, राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी, जो MP बार-बार बनते रहते हैं, 20-20 साल MP, 40 साल MP बनते हैं, वो तो इसका प्रोफेशन हो गया, वो सर्विस कहाँ से रह गई। सारी जिंदगी जो MP बन के रहा तो उसने देश के लिए क्या किया? पार्लियामेंट में वो बैठते नहीं, कहते हम बार-बार MP बने, अपनी जनता ने बनाया, जनता ने आपको बनाया कि आपने जनता का विश्वास जीता। हो सकता है उनमें बहुत अच्छे भी थे, हम ये नहीं करें सारे खराब थे या नहीं थे, लेकिन अगर आप वास्तविकता से देखें, रियलिटी से देखें, यू विल नॉट फाइंड कि फिर मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं हिंदी में गरीबों से बात कर रहा था। आप गरीब लोग हैं, आपको अपने अधिकारों को समझना होगा। आप ठेला चलाने के लिए ही नहीं पैदा हुए,
आप रिक्शा चलाने के लिए नहीं पैदा हुए, आप खाली खेती करने के लिए नहीं पैदा हुए, और वो सिर्फ गैजेट ऑफिसर बनने के लिए नहीं पैदा हुए, और वो सिर्फ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं पैदा हुए, और वो सिर्फ नेतागिरी करने के लिए नहीं पैदा हुए। उन्हें भी इस देश का काम करना होगा, उन्हें भी धूप में खड़े होना होगा, उनको भी फौज में भर्ती होना होगा, उनके बच्चों को होना होगा। वो देश के अंदर ऐश करने के लिए नहीं पैदा हुए कि हम पैसे वाले हैं, हम नेता हैं, हमारे बच्चे तो ऐश करेंगे, एसपीजी हमारे साथ रहेगी, सिक्योरिटी हमारे साथ रहेगी। आपके अकेले बाप का देश नहीं है ये। आप भी एक झल्ली वाले के बराबर हैं, आप भी एक स्वीपर के बराबर हैं, उससे ज्यादा आप भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो उसको वोट से जीत के आते हैं। पर वो किसके वोट से जीत के आता है? एक नाली साफ करने वाला, एक सड़क साफ करने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला आपको वोट दे के आपको सत्ता तक पहुंचा देता है। लेकिन आपने उसको क्या दिया? उसको बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ा पैसा दे दिया, उसको कह दिया हम तेरे को इतने पैसे दे देंगे, थोड़ी सब्सिडी दे दी, एहसान कर दिया आपने उसके ऊपर। और वो बेचारा एहसान कर रहा है कब से? वोट दे दे के आपको सीट पे वो पहुंचा रहा है। आपने क्या दिया उसको? अपनी जेब से आपने क्या दे दिया? उसने तो अपने वोट आपको दिए, और आपने उसको क्या दिया? प्रश्न उठता है, जिस दिन इस देश का गरीब इस बात को उठाएगा, वास्तविक लोकतंत्र उसी दिन आएगा। लोकतंत्र उसी दिन कहेंगे जिस दिन हम कहेंगे कि हमारे देश के 545 लोग एमपी जो गए, उसमें से 450 लोग लोकतंत्र में सीधे साधे गए, किसी पार्टी से नहीं गए, किसी अध्यक्ष से नहीं गए तो सीधे जनता से गए, स्वतंत्र उम्मीदवार बन के गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के गए। वो दिन आना चाहिए इस देश में जब आम आदमी लोकसभा में पहुंच पाए, बिना करोड़ों रुपए खर्चे, बिना कुछ खर्चे, सिंपल हाथ जोड़ के लोगों को बता कि भाई मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आगे जाने दो। वो दिन जब होगा, एक बीए करने वाला, एक एमए करने वाला लोकसभा में जा सके बिना किसी पार्टी सपोर्ट के, बिना किसी प्रेस वालों की सपोर्ट के, बिना किसी शोषा के, जिस जनता उसको भेजना शुरू कर देगी। हमें नहीं चाहिए वहां पे कांग्रेस वाले, हमें नहीं चाहिए वहां पे बीजेपी वाले, हमें चाहिए देश वाले, देश की जनता के लोग चाहिए। देश भारत है, बीजेपी भारत नहीं है, कांग्रेस भी भारत नहीं है, मोदी भी भारत नहीं है, और राहुल भी भारत नहीं है। भारत है तो भारत की जनता है। भारत की जनता ने कहा है संविधान में, हम भारत के लोग गठित करते हैं इस भारत को अपनी आत्मा की शक्ति से, अपनी कसम से कि हम देश को ये शक्तियां देंगे, हम देश को सेकुलर बनाएंगे, हम देश को जो भी उसमें लिखा है वो सब है भारत के लोगों ने किया है। और हम आपको इस संविधान को देते हैं। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप उनके गुलाम ही बनते रहेंगे, इन नेताओं के गुलाम जो अपने आप में कुछ नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन इनकी नहीं है, कोई नॉलेज इनकी नहीं है, कोई एक्सपर्टीज इनकी नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है, कुछ भी ये करना नहीं जानते। डुबो देंगे आपके पैसे को, टैक्स साफ देंगे, मजे ये लेंगे, मेहनत आप करेंगे, कपड़े इनके अच्छे होंगे, मेहनत आप करेंगे, खाना ये सस्ता खाएंगे, मेहनत आप करेंगे, हवाई जहाजों में ये घूमेंगे, मेहनत आप करेंगे, दादागिरी ये दिखाएंगे, मेहनत आप करेंगे, सारे दिन जाके ये ऐश करेंगे। तो आपको क्या मिला? इन लोगों ने आपको क्या दिया? ये प्रश्न नहीं है क्या? ये प्रश्न नहीं है तो फिर प्रश्न क्या है? आप क्या मरने के लिए पैदा हुए हो? आप क्या इनको वोट देने के लिए पैदा हुए हो? क्या है आप कसम करके आए ऊपर से कि हम आपको जाके हर 5 साल में आपको वोट देंगे? नेताजी आप हमारा काम कीजिए, हमारी सेवा कीजिए, और वो नेताजी आपकी सेवा करेगा क्या? क्या ये प्रश्न नहीं है? मंच से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर देना और फिर जाके शराब पीना या गुंडागर्दी के शुरू कर देना, लोगों को बेवकूफ बता देना कि मैं इतना पैसा दूंगा तो मैं ये करूंगा, और हम लालच में आ जाते हैं। हम किसी के 15 लाख के लालच में आते हैं, किसी के 72,000 एक साल के देने में लालच में आते हैं, कोई हमें घर फ्री देना चाहता है, कोई हमें बिजली फ्री देना चाहता है, कोई हमें पानी फ्री देना चाहता है। हम क्या भीख मांगे हैं? हम क्या मेहनत करते हैं तो भीख मांगे हुए? हम आपकी दया पे क्यों जिए? हम अपनी शक्ति पे क्यों ना जिए? और आपकी शक्ति है भारत, आपकी शक्ति आपका वोट, आपकी शक्ति है वो देश की शक्ति। छीन लो इनसे, इनसे छीन लो जो बैठे हैं आप बन के कुछ नहीं करना, जिन्होंने इनका अधिकार समझ के बैठे हैं कि हम ही लीडर बनेंगे देश के, हम ही नेता बनेंगे। अधिकार आपका है, जनता का अधिकार है भारत का। भारत इनके घर से नहीं बना, ये लेके नहीं आए अपनी संपत्ति। हमारे देश के पैसे से, हमारी मेहनत से ये जीना चाहते हैं, और हम दिन भर मिट्टी खोद के काम करें या कंक्रीट डाल के काम करें या झल्ला ढो के काम करें या दिन भर खून पसीना बहा के काम करें, और हम इनको हर बार जिताते रहें कि आइए साहब नेताजी हम आपके पैर छूते हैं, आप हमारे भगवान हैं। ये भगवान ऐसे होते हैं?
लुच्चे लफंगे लुटेरे सारे, झूठ बोल के राज चलाने वाले सारे, हम लोगों को लड़वाना आपस में इनका काम है। हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो, मुसलमान को सिख से लड़वा दो, सिख को ईसाई से लड़वा दो, और इन सबको लड़वाते रहिए। ये लड़ते रहेंगे और हम मस्ती मारते रहेंगे। दिन में ये झूठ बोलते हैं एक दूसरे के, बीजेपी वाला कांग्रेस को खराब कहता है, कांग्रेस वाला बीजेपी को खराब कहता है, वो उसको सही कहता है, और रात को जाके सब एक होते हैं। ये धोखेबाजी नहीं चलेगी। देश के लोगों को सुनना, आपको तो खैर मानते ही नहीं नेताओं, हम तो मानते ही नहीं आपको। हम तो उन लोगों को कह रहे हैं कि जो नेता का मतलब नहीं समझते, कि आप नेता का मतलब समझ जाइए, आप आगे जाइए, आगे निकल जाइए, भूल जाइए इन लोमड़ियों को, भूल जाइए इन जानवरों को। ये जानवर से कुछ नहीं है। आप जाइए इनकी सीटों पर बैठिए, भूल जाइए कि आप हरिजन हैं, आप कौन हैं। आप याद रखना, देश आपका है, शक्ति आपकी है, संविधान आपका है, पावर आपका है, वोट आपका है, पैसा आपका है, टैक्स आपका है, सड़क आपकी है, मकान आपका है, ये पार्लियामेंट आपकी है, ये संविधान सभाएं आपकी हैं, इनकी नहीं है। अपनी शक्ति को यूज करके आगे जाइए, बैठिए, और जो आपको सही लगता है वो कीजिए। इनको घुसने भी मत दीजिए वहां पे। जिस दिन ऐसा देश हो जाएगा उस दिन संविधान सार्थक हो जाएगा। नहीं तो ये लोग तो मर्डरर्स हैं, ये लोग तो संविधान का खून करना चाहते हैं, ये लोग तो अपनी पावर सामने लाना चाहते हैं। ये लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं सके, हराम की इन्होंने खाई है, चाहे वो पंडित रहा हो या राजपूत रहा हो, सब पैसे से पैसा कमाते हैं, कोई मेहनत से पैसा नहीं कमाता। बता दीजिए कितने पंडित हैं जो मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो नाली में उठा के सीवर साफ कर सकता है, मैं उसको मानूंगा असली आदमी जान पे रिस्क लेता है और नीचे जाता है, और जो नीचे रिस्क लेता है उससे दूर हटता है, हट कर बदबू आ रही है, गंदा आदमी, भंगी है, चमार है, ये उसको ऐसा बोलते हैं, ये हमारा गुलाम है ये, और ये राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ये बड़े आदमी हैं। कौन बड़ा आदमी, कैसा बड़ा आदमी, किस बात के बड़ा आदमी? ये जिस दिन आप समझ जाएंगे, अपने आप को गरीब मत समझो। अपने आप को, पैसे से आदमी गरीब अमीर नहीं होता है, वो इकोनॉमी एंगल से होता है। गरीब अमीर अपनी शक्ति से होता है। आप जिस शक्ति को लेके आए हैं जमीन पे, वो शक्ति है आपका भारत देश, वो शक्ति आपका संविधान। उसको समझ लो। बार बार मैं इस संविधान के बारे में इसलिए आपसे बताना चाहता हूँ कि संविधान ही आपकी मंजिल है, यही मंजिल तक लेके जाएगा, यही आपकी बंदूक है और यही आपका बॉम्ब है। इस संविधान की शक्ति के अंदर बड़े बड़े बॉम्ब छुपे हुए हैं जिसको आप चलाएं। इसके अंदर बड़े बड़े गोले बारूद छुपे हैं, उसको चलाएं। वो गोला बारूद को कुछ देर के लिए होता है, जो आतंकवादी चलाते हैं या जो फौजें चलाती हैं वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन ये गोला बारूद बड़े लंबे समय के लिए है। ये जब तक ये देश रहेगा तब तक ये संविधान रहेगा। तो देश तो हजारों लाखों साल रहेगा, तो इस संविधान भी उस टाइम रहेगा। आप जिस दिन संविधान की शक्ति को समझ जाएंगे, आप अपने आप को बहुत बड़ा बना पाएंगे। जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको खच्चर ही बनना पड़ेगा। ये आपको डंडा मार मार के आपसे काम कराएंगे, ये आपको भूसा भी खाने को नहीं देंगे, आपको कहीं घास खानी पड़ेगी, या आपको पानी पीने को नहीं देंगे, आपको नाले का पानी पीना पड़ेगा। अगर आप ये सब करना चाहते हैं, नाले का पानी पीना चाहते हैं, घास खाना चाहते हैं, डंडे खाना चाहते हैं, तो बने रहिए अनजान संविधान से, बने रहिए अनजान संविधान से। ये संविधान ही आपकी माता है, पिता है, और नहीं तो ये आपका कुछ भी नहीं है। देते रहिए वोट हर 5 साल में, बने रहिए इनके गुलाम। कभी बीजेपी के गुलाम बन जाइए, कभी कांग्रेस के गुलाम बन जाइए, कभी समाजवादी के गुलाम बन जाइए, कभी किसी के गुलाम बन जाइए। आप अगर गुलाम बनने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, नहीं तो आजाद देश का मतलब संविधान ने आपको आजादी दी है, संविधान ने आपको हक दिए हैं। आपको कहा है आप प्रभु सत्ता है तो प्रभु सत्ता बनिए। आपको कहा है कि आप सब धर्मों को मानने वाले हैं, सब शक्तियों को मानने वाले, तो मानने वाले बनिए। आप लोकतांत्रिक बनिए, आप गणतांत्रिक बनिए। खाली लाल किले में झंडा फहरा देने से कोई गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक नहीं हो जाता है। 26 जनवरी निकाल देने से कोई गणतांत्रिक नहीं हो जाता है। आप करके दिखाइए, अपने हक लेकर दिखाइए। गण का मतलब आपका तंत्र है, जन का मतलब आपका तंत्र है। जन गण मन अधिनायक जय होए भारत भाग्य विधाता। आप हैं भारत के भाग्य विधाता। ये नेता तो कुछ नहीं है, ये तो खाली अपना भाग्य बनाते हैं, ये देश का भाग्य नहीं बनाते। आपको उल्लू बनाते हैं तो आप उल्लू बने रहेंगे क्या? ये सब उल्लू बना रहे हैं। सब इनके जो नए नए नेता पैदा होते हैं वो उल्लू बना रहे हैं। कोई सीधा नहीं काम कर रहा। कह के आते हैं हम देश को सुधारेंगे, फिर आके प्रधानमंत्री बन जाते हैं, चीफ बन जाते हैं, हम देश का ये करेंगे, मुझे प्रधान सेवक दीजिए, सबसे बड़े लुटेरे बन जाते हैं, बैंकों को खा जाते हैं, लोगों को खाने देते हैं। झूठ बोल बोल के सत्ता में बने रहना इनका अधिकार है। क्या फायदा इनका? आपको क्या मिला आज तक? आप सोचिए, आपने कितने साल से काम कर रहे हैं, आपके बच्चे को स्कूल भी अच्छा नहीं मिलता, आपको रोटी भी अच्छी नहीं मिलती, नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सोच नहीं सकते। आपकी रोटी ये खा जाते हैं, आपका पसीना ये पी जाते हैं, आपकी मेहनत ये खा जाते हैं। जब तक आप इस बात को नहीं सोचेंगे,
आप झल्ली वाले ही बने रहेंगे, आप रिक्शा ही खींचेंगे, आप सड़क के पत्थर ही तोड़ेंगे, आपके पसीने की वैल्यू नहीं होगी, आपके खून की वैल्यू नहीं होगी। जिस दिन आप इस संविधान को समझ गए कि संविधान आपको क्या देता है, उस दिन एक भी गद्दी पे नहीं बैठ पाएगा, याद रख लेना। गद्दी आपकी होगी, आपके बच्चों की होगी। पढ़ाइए अपने बच्चों को, नॉलेज दीजिए, इलेक्शन में खड़ा कीजिए, आप इलेक्शन में खड़े हुए, आप जीतिए और जाइए लोकसभा में, किसने आपको रोका है? लेकिन नहीं, आप हाथ जोड़ेंगे इनसे, माई बाप मुझे ये दे दो, मेरी सड़क बनवा दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो, हाथ ही जोड़ते रहना, क्योंकि आप गुलामी की आदत हो चुकी है। ये वही लोग जिन्होंने अंग्रेजों के साथ गेम खेला, अंग्रेजों के इन्होंने जूते पॉलिश किए, अंग्रेजों से साथ उन्होंने देश के बारे में गद्दारी की, वही सत्ता में बैठे, उनसे आप आशा रखते हैं? और कांग्रेस वाले हिजड़े लड़ नहीं सकते इनसे? बताइए, इतने साल राज किया इन्होंने, कांग्रेस कह दिया हमने देश को आजाद कराया। अरे आप में तो शक्ति ही खत्म हो गई, आप तो कुछ आज की तारीख में है ही नहीं, आप तो इनका ग्रहवान भी नहीं पकड़ सकते, इनसे डरते हैं आप, क्योंकि शायद आप भी इनसे मिले हुए हैं, नहीं तो इनका ग्रहवान पकड़ लेते, अब तक बताते गलत काम क्यों कर रहे हैं आप, आपने क्यों नहीं दिए वायदे किए तो क्यों पूरे नहीं किए? लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिक्के के दोनों है, एक हेड है एक टेल है, दोनों पंडित की औलाद हैं, दोनों राजपूतों की औलाद हैं। इन्हीं तरीके से अमीर पंडित होते हैं, अमीर राजपूत होते हैं, अमीर सारे होते हैं, लेकिन आप लोग अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आप मेहनत करते हैं। ना पंडित मेहनत करता है, ना राजपूत मेहनत करता है, याद रख लेना, ये सारे मैनेज करते हैं, सबके बड़े बड़े बिजनेस हैं, सब पैसे से पैसा कमाते हैं, सब आगे जाते हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास जमीनें हैं, सबके पास मकान हैं, मंजिलें हैं। इनके बच्चा कोई फौज में नहीं जाता है, इनका बच्चा कोई मेहनत का काम नहीं करता है, लेकिन आपका बच्चा सारे काम करेगा, आपका बच्चा सीवर लाइन में भी उतरेगा, आपका बच्चा सड़क भी साफ करेगा, आपका बच्चा जूते पॉलिश भी करेगा, आपका बच्चा सारे काम करेगा। और एक कोई आगे निकल भी गया, गलती से IAS ऑफिसर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो ऐसे दिखाएंगे, देखो उस छोटे आदमी का बच्चा इंजीनियर बन गया। क्यों भाई, छोटे आदमी का बच्चा नहीं बन सकता इंजीनियर? छोटे आदमी का बच्चा दिमाग नहीं रखता, उसको चांस मिला तो वो बन गया, आप उसको चांस देने नहीं देते तो कैसे बनेगा? क्योंकि आप कातिल हैं चांस के, आप कातिल हैं गरीब के, आप अमीर हैं तो कातिल हैं गरीब के, आप कातिल हैं उसके हक के, आप कातिल हैं उसके विश्वास के, आप कातिल हैं उसके ईमानदारी के, आप कातिल हैं हर काम में उसकी आत्मा को खत्म किया आपने। It's very serious discussion. You have to understand, my dear people. You may be poor, doesn't matter. You may not be understanding English, but I'm just telling you: be careful. Love Constitution, use Constitution, earn Constitution. Join Lok Sabha, join Rajya Sabha. Have patience, have courage. Don't depend upon these people who are looting you, who have been looting you. They are just cheating you, and don't comment on their cheating. You are brave. Be brave. Understand Constitution, understand your power of vote, understand power of power, have education, let your children have education, and enter parliament. Throw them out. They are not worth parliamentarians. Your son can be parliament, your daughter can be parliament, and you can be parliament. Why don't you stand an election to get in? What are these? They have no competence, no capability. They're just liars and nothing else. You understand like this, and when you understand like this, you will be great people. You have to understand, and that's why I'm just saying it. धन्यवाद। आप कैसे बात नहीं करूँगा, 2 घंटे हो चुके हैं और लोग कहेंगे बहुत बोलता रहता है। कहने तो लोगों को बोलेंगे, हम तो जब गुस्सा आएगा बोलेंगे। हमें देश को ठीक करना है, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैं सोचूंगा तो देश के लिए सोचूंगा। आप ये सोच लीजिए, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मैं देश के लिए सोचूंगा, मैं देश के लिए सब करूंगा, भूल जाए इन पार्टी को। ये चोर डकैतों की पार्टियां सारी की सारी, ये सब अपने लिए जीती है, कोई आपके लिए नहीं जीती है। कोई आपको सुनेगी नहीं, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा कि आप मर गए तो क्यों मर गए, आप जिंदे हैं तो क्यों हैं जिंदे हैं। तो आपको थोड़े पैसे जरूर दे जाएंगे झूठ बोलने के लिए, वोट हमें दे देना। आपको हो सकता है शराब की बोतल दे जाए, हो सकता है कपड़े दे जाए। इतनी गंदगी ये फैला चुके हैं और फैलाते रहेंगे। आपको 2000, 3000, 5000 दे जाएंगे, भैया वोट हमें देना। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, इसलिए इन चोरों की बातों में नहीं आना। आपका एक वोट इन्हें सत्ता में ले आता है, याद रख लेना। आपका एक वोट इन्हें सत्ता में ला देता है, तो आप उसी वोट से तो बाहर भी कर सकते हैं, अपने आप के वोट से आप बाहर जा सकते हैं। तो आप इनको हटा दीजिए। आप इतने भी गरीब मत बनिए, इतने भी डरपोक मत बनिए कि आप इनको हटा नहीं सकते। यू हैव एब्सोल्यूट पावर टू थ्रो देम आउट ऑफ पार्लियामेंट because they have brought 233 criminals from their parties, various parties into parliament, Lok Sabha, and we are being ruled by those criminals. You understand that? ऐसे मुजरिमों को पार्लियामेंट में रखा है हमने। शर्म आनी चाहिए अपने आप में। ऐसे गंदे लोगों को, जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं आपकी वजह से और मेरी वजह से। नहीं तो उनकी क्या औकात
कि ये किसी रेस्टोरेंट में चाय का भी काम कर सकें, ये कोई सड़क भी साफ कर सकें। सड़क ये वो साफ करते हुए दिखाते हैं यहाँ कोई गंदगी नहीं होती है। शर्म आती है देखते हुए। एक आदमी नेता पेड़ पर पानी दे रहा है, छतरियां ऊपर रख के, बारिश आ रही है, वो पानी दे रहा है। ऐसे गधे नेता हमने रखे हैं। मेरा गधा गधों का लीडर है इस देश में। माई डोंकी इज हेड ऑफ donkeys in this country, and that's what I say. Join parliament, have power, don't worry about this, but constitutional is your umbrella, constitutional is your warden, constitutional is your mother and father, constitutional is your future, which they want to remove. This is your power. Make it, use it, understand it, take it, and be honor of this country. Jai Bharat.